Except, if I can speak on your behalf, except calling a provision of law absurd. As a parliamentarian, you would not want that to. That can be changed. बिल्कुल ठीक है. चलें जी. अच्छा सर, before I end, एक दो just the concept कि एक जिसने कंडक्ट किया इलेक्शन उसने दुरुस्त कंडक्ट नहीं किया और उसकी वजह से सिंबल ले लिया गया. जस्ट द कॉन्सेप्ट, एक केस था काफी पुराना, PLD 68 सुप्रीम कोर्ट. उसमें हुआ ये था कि बार काउंसिल्स के इलेक्शन कराने होते हैं एडवोकेट जनरल ने, वो चले गए रन ऑफ कच करने, आर्बिट्रेशन रन ऑफ कच की. सो ही वाज गोइंग टू बी अवे. तो कोई असिस्टेंट एडवोकेट जनरल या एडिशनल थे, उन्होंने इलेक्शंस करा दिए ऑफ द बार काउंसिल. तो बहस हो गई कि कुछ झगड़ा हो गया बिटवीन द डिफरेंट कैंडिडेट्स ऑन द इलेक्शन. सो वन ऑफ द ग्राउंड्स टेकन वाज कि ये इलेक्शन जो जिसने कराया इज नॉट द एडवोकेट जनरल, ही इज समबडी एल्स. तो कोर्ट ने कहा कि शो अस द प्रेजुडिस दैट वाज कॉज्ड बिकॉज ऑफ हिम नॉट बीइंग अ एडवोकेट जनरल. तो अगर वो प्रेजुडिस नहीं है तो देयर इज नो कनेक्शन और नेक्सस बिटवीन अस डिक्लेयरिंग दैट इलेक्शन एज वॉइड और अदरवाइज. Wouldn't those who wanted to contest, who've not been able to contest, aren't they prejudiced? किसी ने ये रेज नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि ये इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट गलत होने की वजह से वी आर प्रेजुडिस्ड. Nobody raised that. नहीं, वो उनका तो और भी बुनियादी, वो तो कहते हैं हमें नॉमिनेशन पेपर, हमें आपने नॉमिनेशन पेपर तक नहीं दिया तो हम इलेक्शन लड़ेंगे कैसे? जी, वो ये कहते हैं. उनका तो और भी बुनियादी. लेकिन मेरा अभी मैं जो पॉइंट बना रहा था वो ये था कि nobody said कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो गलत थी और जो कंडक्ट किया वो गलत था. None of the people have said that. They've only said what your lordship is saying. शायद उनको पता भी ना हो ना कि आपने अंदर करा क्या. Correct. क्योंकि जब वो तो सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं कि जी मुझे इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दे रहा, अब उनको ये नहीं पता कि ये कागज तो बाद में आए ना कि ये कागज है वो कागज, उनको तो ये नहीं पता होंगी चीजें, शायद वो ऑब्जेक्शंस ले लेते. That point is conceded. But nonetheless the point being कि कोई prejudice on the face of it नहीं हुआ. और ये judgments हैं, कुछ judgments मैं quote करना चाहूँगा your lordship में say points different things. किस point पे? इसी point पे कि there's a concept of de facto, something happening de facto, कि appointments गलत भी हों तो जो orders पास हो गए हों या actions हो गए हों वो nullify नहीं होते. ये तो आपका कोई सरकारी ओहदा तो नहीं है ना जी. हाँ, तो वो प्रिंसिपल यहाँ कैसे वो इस तरह अप्लाई करूँगी इवन सरकारी ओहदे में, इवन सरकारी सिचुएशन में, इवन जहाँ जजेस अपॉइंट गलत हो जाएं और उनके जजमेंट्स को क्वेश्चन किया जाए तो ये कहा जाता है मलिक असद केस में तो प्रोटेक्टेड है. जी जी, अली वो वाला दो ज्यादा जजेस के वो जी जी, वो फरजंद केस, फरजंद अली केस, असद अली केस, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन केस, वो तो सेटल्ड प्रिंसिपल है. तो वो अगर प्रिंसिपल आप देखें कि अगर आप पे कैसे लागू होगा ये प्रिंसिपल, वो इस तरह होगा कि अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर को ये कह सकते हैं कि वो उसकी अपॉइंटमेंट गलत है तो उसके ऑफिशियल ऑर्डर्स और उसकी जो डिसीजंस हैं ठीक हैं, तो फिर एक प्राइवेट पार्टी में अगर एक बंदे को आप कह भी दें कि उसने गलत अपॉइंटमेंट हुआ है इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, तो इलेक्शन को किस तरह अवॉइड कह सकते हैं. टू दैट एक्सटेंट इज माय आर्गुमेंट ऑन दिस. तो आप दोबारा कर ले इलेक्शन, मसला क्या है? सर सिंबल निकल गया ना. आई हैव नो इशू. अच्छा ओके, ऐसी आई हैव नो इशू. ठीक, चलें. अगर मुझे मिलता टाइम तो आई वुड डन इट, लेकिन वो सिंबल मींस आई एम चिल, बेसिकली चिल. खत्म आई एम खत्म जी. I hope you're not खत्म. अच्छा, वो आए वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, बुलाएं उनको. तो गौर साहब किधर हैं? A very serious complaint has been made before us. This is completely intolerable. Please attend to this complaint immediately. If heads need to roll, do so, whatever it is, whatever. Mr. Gaur Ali, घर पे कौन था आपका? मेरी मिसेस थी, मेरा बेटा था. और वो आप फौरन उनके घर पे जाइए खुद, लॉर्डशिप. ठीक है. और क्या हुआ, अब यहाँ हम ये जरा फोकस नहीं हटाना चाहते हैं इस केस से. एंड इफ यू स्टिल हैव एनी कंप्लेंट,
you submit it to us in writing. Sure, Your Honor. ठीक है? So this is very serious. Do you know what has happened, or you don't know what has happened? Lordship, it's jo early. Do you know what has happened or not? Lordship, we have. It's a raid on. Too early to comment on that. We understand certain things have happened, and the police has gone to that place. And लेकिन जो details जो इनका जो मौक़िफ़ है, जैसे आपने नहीं, आप क्यों गए थे इनके घर पे, ये बताइए। लॉर्डशिप, जो अभी तक इतला आई है उसके मुताबिक जो पुलिस की एक पार्टी ने वहां पे रेड किया है, क्यों? और दे हैड द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स। कौन है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर? ये डिटेल्स लॉर्डशिप इतने कम टाइम में एग्जैक्टली नाम मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जब गए हैं पता चला है कि ये बैरिस्टर साहब का घर है, सो दे वर रिटर्न्ड। नो, मगर वो कौन है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर? वो लॉर्डशिप उस थाने में लिखा भी होगा, जो ASI या जिस लेवल का ऑफिसर गया है, ही मस्ट हैव दैट। कौन सा थाना है? कोसार आप जाती तौर पे मालूमात कीजिए और फिर हमें राइटिंग में रिपोर्ट दीजिए, और एसोसिएट गौर साहब और his wife or whoever is at the home, तो आप तो यहाँ थे, आपको तो नहीं पता वहाँ क्या हुआ, ठीक है? This is a very serious matter. देखें, every citizen has to have full protection, ठीक है? Since you are not aware of it, but heads may roll, so आप जरा सा take personal attention of it. रेड हुई है नहीं हुई है? गौर साहब, would you like to go with him now, or you want? हाँ, रेड हुई है जी यूर ऑनर। आप ऐसा करें कि आप इनको ले जाइए गौर साहब को अपने साथ, ठीक है लॉर्डशिप। इन द सेंस कि उनसे इनको तो नहीं पता, आप इन्हीं के घर जाइए, जी सर। आप खुद जाइए, गौर साहब को भी ले जाइए और मालूमात कीजिए, एंड इफ गौर साहब इज नॉट सेटिस्फाइड, देन Hamid Khan साहब, you can convey the thing or he can directly, so it would be better अगर आप कर लें, ठीक है? तो ठीक लॉर्डशिप। anything else गौर साहब? That should be enough for now, Your Honor. तो आप ठीक है, प्लीज go along with the Inspector General. Sure, Your Honor. आप जाइए immediately. No other thing. This is the first priority order of business. लॉर्डशिप, Thank you very much for coming into this. No. Actually, I didn't want your arguments to, because I wanted to first send for. I mean, I don't know what's happening, so I just wanted to tell the AG to send for the Inspector General of Police. Appreciate it, sir. I mean, no point telling the AG he won't know anything. जी. Thank you, sir. I have concluded, ma'am. नहीं, अच्छा, Mr. मखदूम अली खान, where is he? अच्छा, जो बाकी 13 लोग हैं उनके लिए कोई वकील हैं या वो? हाँ, you only represent one. नंबर के लिए बुला लेना। अच्छा, 5 लोग इन पर्सन हैं। अच्छा, सॉरी, आप अच्छा, you wanted to add something, जी? Short submissions, but one thing for which I am extremely grateful that your lordship has taken cognizance of taken notice of what has happened during the course of the thing. This incident actually provides answers to 2 questions that have arisen here during the course of hearing. One was, हाँ साहब, थोड़ा सा इंतजार करें, let's see what happens. नहीं, वो अगर गौर साहब is not satisfied, we will take further action. Don't worry. इस केस को कुछ, we have not taken any, मतलब चलिए अब केस पे बात करें। जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। केस पे बात करें। परसेप्शन ये है कि यहाँ पर किसी को कोई काम नहीं करने दिया था। The 2 places इस्लामाबाद। साहब, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं। नहीं सर, बात तो मेरी कबूल कर लेने, उसका आप नोटिस ले रहे हैं, मेरा फर्ज है मैं आप तक पहुंचाऊं। Why we held the elections in Peshawar? Because the administration in Islamabad and Punjab harass our workers. नहीं, मगर खान साहब, आपकी बात अगर ये हम मान लेते हैं, तो अगर आपकी बात ये बात है, तो फिर आप सरकार को खत क्यों लिख रहे हैं कि जी मैं इलेक्शन करा रहा हूँ पेशावर में, मुझे सिक्योरिटी दो? फिर तो आप चुपके से कराएं, इनको बताएं नहीं। तो एक तरफ तो आप बता भी रहे हैं ना, तो वो जरा कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है उस बात में। इसलिए अल्टीमेट हम आपकी बात समझ गए, मगर फिर हमारा सवाल फिर आप जवाब दीजिए ना। अगर आपने कहा कि जी वो तो हमें मीटिंग ही नहीं करने देते और हम चुपके से जाकर अपनी मीटिंग कर ली, मगर फिर आप खत तो नहीं लिखते उनको कि मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, तो उन्होंने जवाब में लिख दिया भाई कहाँ कर रहे हो, हम आपको वहां सिक्योरिटी देते हैं। कि यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते नहीं हैं। नहीं, मैंने कहा जब आपने जब बात की उसका मैं फिर सवाल बनता है उससे। जी जी जी
चलें we still have a duty to चलें, let's proceed with the notice case. to them. Okay. Secondly, We can't provide every remedy in the world, but we can Why attend to did the we case. choose- जी. Why did we choose the Peshawar High Court? दूसरा ये सवाल था, मैं अपने तौर पे जवाब जी देता जी. हूँ. Because of our experience, so many hundreds of our workers, thousands of our workers, ladies have been picked up during the day. खान साहब, During the केस night. केस के लिए आपकी कोई वर्कर की तो जरूरत नहीं है, केस के लिए तो एक वकील की जरूरत है ना. अली जफर साहब तो खड़े भी हुए कल कोर्ट में, उन्होंने बात भी की, तो हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स पिकअप हो रहे हैं या ना हो रहे हैं, मगर केस तो एकदम फाइल हो गया तो किसी को आने की तो जरूरत नहीं है कोर्ट में. सिर्फ वकील, या तो आप कहें जी वकील को नहीं जाने दिया, वो एक अलग बात है, किसी को आने की जरूरत नहीं है. जैसे आप आज खड़े हैं हमारे सामने जी, आप 1000 वर्कर्स नहीं आए, वो आपकी मर्जी, मगर उनको आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आने की जरूरत है. मैं परसेप्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ why we preferred, because the most independent of the high courts we feel is still the Peshawar High Court, because their orders are being carried out. The orders of Islamabad High Court and Lahore High Court have not been carried out. इधर से बेल मिलती है, वो बाहर निकलते हैं, साथ ही उनके डिटेंशन ऑर्डर में फिर अंदर कर दिया जाता. पेशावर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में मगर ये देखिए, बुनियादी आईनी सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं. एक लिस्ट आपने 5 मेंबर बेंच की बेंच बन गई. 5 मेंबर इज अ वेरी बिग बेंच फॉर अ हाई कोर्ट. लाहौर विच यूजुअली इट्स 1 मेंबर सिंगल मेंबर बेंच. तो वही केस आप वापस ले लेते, फिर दूसरी बात है, मगर वो केस पेंडिंग उधर है, फिर आप लाहौर चले गए, इस्लाम पेशावर चले गए. इस बात समझ नहीं आ रही है ये बात. सर वो तो किसी एक इंडिविजुअल ने किया, पार्टी ने नहीं, वो वाला केस भी छोड़ दीजिए, वो भी मान लेते हैं, मगर वो जो WP जो वो क्या नंबर है उसका 81171 इसके लिए बनी थी, या 2023 इसके लिए बनी थी 5 मेंबर बेंच. वो वाला दूसरा फैसला आप जवाद हसन साहब की बात कर रहे हैं, वो सिंगल मेंबर था और इंटर कोर्ट अपील में वो अपील्ड हो गया है. हम उसको भी छोड़ देते हैं. हम इस वाले केस की बात कर रहे हैं, 5 मेंबर बेंच जजमेंट, जिसमें इलेक्शन ही का इशू था, लेकिन उसको प्रेस नहीं किया गया है. नहीं, अब आज भी जिंदा है, केस पेंडिंग पड़ा है. कल उसमें अली जफर साहब ने खुद कहा कि मैं अपीयर हुआ था, मगर बेंच डिड नॉट से दैट आई मूव्ड इन एप्लीकेशन विथड्रॉइंग द पिटीशन और एनीथिंग. बट एनीवेज, इवन इफ ही डज सो नाउ, the relevant date will be at the date of filing of the petition in the Peshawar High Court. Otherwise, देखिए, हमें भी पता था, हम भी वकालत करते थे, कभी सोचते थे कि कभी इधर ज्यादा केस चल जाएगा या whatever, या जजेस का अप्रोच होता था. ये हम सब गुजरे स्टेज से, तो हम कोशिश करते थे कि भाई जुरिस्डिक्शन खींच के ले भी जाते थे कहीं और भी. देखिए, we have all played this game. पर एक दफा इंतखाब कर लिया आपने जुरिस्डिक्शन का, कभी कभी हमने इस्लामाबाद में कर दिया, इंपोर्ट हो रही है कराची से, नहीं बिकॉज ये FBI इज बेस्ड इन इस्लामाबाद, हमने वो यूं बना ली जुरिस्डिक्शन. तो अगर आपने जब इंतखाब कर लिया फिर जाना मुझे नहीं समझ आता है, ये बात है. एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, मैं इसको ज्यादा डिटेल में टाइम ठीक है, आगे बढ़ा. आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू. नाउ सर, आई एम कमिंग टू द propositions, few propositions in addition to what has been very ably, comprehensively argued by Mr. Ali Zafar. I'm just adding a few propositions to that. And most courteously, if you may add. Your Lordship knows me better than that. And you are also very kind, always. Ji. I try my best not to be ever discourteous, sir. First proposition, first and foremost submission is that Election Commission of Pakistan, ECP, being a constitutional and statutory body performing regulatory and quasi-judicial functions. That ECP being a constitutional/statutory body performing regulatory and quasi-judicial functions cannot legally be an aggrieved person. And therefore has no locus standi to file the present petition before this honorable court. Therefore, the petition of ECP is not maintainable
and liable to be dismissed on this preliminary ground. I'm relying on two recent judgments of the Supreme Court. एक चीज बताएं, when you use the word aggrieved person, does Article 185 require that? If the judgment is wrong, I may not be aggrieved by it. Can I not still challenge it under? They've come under 185. They have not come under Article 199, which of course starts with the word any aggrieved person except habeas corpus. So let's see, 185, does the word aggrieved mention or no? It's not mentioned, no doubt about it. But generally, suppose someone challenges a judgment of the higher court, yes, and he may not be aggrieved, but he may say this judgment is wrong. may not So be. if he was a party in the lower court, will we say, oh, you're not aggrieved by it, but would it really matter? We agree with you, but it's not a requirement of the Constitution that they have to be aggrieved, or is it? It may not be in Article 185, but may submit that generally the principle that is applied for any kind of writ jurisdiction and separate jurisdiction is under Article 199. So, though the appeals or the petitions are filed under Article 185 Clause 3, but that does not mean that the principle applicable to Article 199, because it is initiated through Article 199. But there they were the respondent, not the petitioner. Yes. So the requirement of aggrieved would be on the petitioner, not on the respondent. No doubt. But sir, the result is that it is continuation of that. I was the petitioner, here they are the petitioners. But the question ये is, बताइए, suppose ऐसे मफरूजे के तौर पे जी जी, कोई और केस में हाई कोर्ट कह देता है आई हियर बाय अबॉलिश द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जजमेंट आ गया. if another party aggrieved can come home. ECP can't come. अजीब सी बात नहीं होगी? या वो किसी मेंबर को रिमूव कर दें कि आई डोंट लाइक दिस मेंबर्स फेस, आई रिमूव हिम. I mean, I'm giving you absurd examples so the point can be appreciated. So ECP can't come, जी मेरे मेंबर को हटा दिया, unless it's a co-Toronto rate, तो अलग बात है. ठीक है, हम ये सारे मेंबर्स बदल दो, नए वाले अपॉइंट कर दो. जावेद हाशमी केस में भी ECP था पिटिशनर इस कोर्ट में. जावेद हाशमी का जो केस है ना, कल साइट हुआ है. ये जरा मुझे ज्यादा इसमें, but I'm relying on judgments subsequent to the Javed Hashmi's case. Let me show these judgments. जावेद हाशमी का केस तो 5 These are मेंबर very recent judgments. One is 2023 judgment. जो आपने हमें दो दे चुके हैं वो रिपीट ना कीजिए, वो मैंने अभी भी नोट आपको बता देता हूँ. जी, वो आप एक ऑम्बड्समैन का था और एक वो था कमीशन का. वो जी सर, हाँ, वो वाले हमने नोट कर लिए, उसके अलावा कोई बताना कर ली. चाहें? वो तो अच्छा. आपने पहले दिन बता दिया था. एक जजमेंट इसके अलावा दूसरी PLD 2020 Supreme Court 5-1. There is also now one more judgment. PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट, That PLD 2020 Supreme Court 586. ये वही वाला है, कल वाला है. वही दो जजमेंट. हाँ, वो तो मैंने नोट किए हुए हैं. एक केस में जो था वो कंपटीशन कमीशन था, स्टैट्यूटरी बॉडी. दूसरे केस में ओम्बड्समैन था. इलेक्शन पिटिशन कमीशन का कोई डायरेक्ट केस है आपके पास, जिसमें इलेक्शन कमीशन का पार्टी और उसमें ये होल्ड हुआ हो कि आपकी तरफ से आगे आप तो अगली पार्टी हो ही नहीं सकते? ड्रॉ पैरेलल, वो मैं आपको अर्ज किए जाता हूँ कि इसमें क्या वजूहात है, व्हाट इज अ पैरेलल बिटवीन द टू. एक थर्ड जजमेंट है जो अभी रिपोर्ट नहीं हुई है. दे दीजिए, कॉपी दे दीजिए. उसकी कॉपी से आपको दे दी. दे दे. A recent judgment authored by your lordship, civil petition number 3532 of 2023. जावेद हाशमी फुल मेंबर है. आप दे रहे हैं कॉपी? जी, इसकी कॉपी नए वाले जो कह रहे हैं वो कम किधर है, महसूस के दो दे रहे थे ना ये बार. अच्छा, ये राइट टू इंफॉर्मेशन वाली जजमेंट इसी पॉइंट नहीं, ये जजमेंट है जहां रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन फाइल की थी और जनाब ने होल्ड किया है कि इट कैन नॉट. राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये right of information वाला मुख्तार अहमद अली वाला केस. हाँ, तो हमने दे दी इंफॉर्मेशन.
नहीं तो इससे आपके केस से क्या ताल्लुक बनता है? नहीं, इसमें सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट as a constitutional body cannot be a petitioner. This is what has been, as I see, held in this judgment, in para 9 of the judgment. May I read out this para 9? अगर आप हमें दे देते तो आसान होता है। Another 5 minutes I'll provide. आप पढ़ने जी सर, पढ़ देता हूँ। पढ़ लीजिए। The question of maintainability of the writ petition filed by the registrar of the Supreme Court before the High Court was raised before the learned single judge who held the petition to be maintainable by referring the cases of Registrar Supreme Court of Pakistan versus Hassan Akbar and Registrar Supreme Court of Pakistan versus Qazi Wali Muhammad. The Hassan Akbar case, this Hassan Akbar's case is 1987 Pakistan Criminal Law Journal, and the other Qazi Wali Muhammad wala case is 1997 SCMR 141. The Hassan Akbar case was with regard to complaint against Assistant Advocate General who had appeared before the Supreme Court when he was not enrolled out of the recommendation of the disciplinary committee. Therefore, it cannot be cited as a precedent entitled to Supreme Court to initiate litigation. In the other case, Qazi Wali Muhammad was terminated from the service of the Supreme Court and filed an appeal before the Federal Service Tribunal, whose order reinstating him was challenged by the registrar before the Supreme Court under Article 212(3) of the Constitution. This court held that Qazi Wali Muhammad was not a civil servant as defined in the Civil Servants Act 1973, therefore the tribunal did not have jurisdiction. The registrar had not initiated litigation in Qazi Wali Muhammad case. He had not filed the appeal before the tribunal. The particular facts and the very limited scope of these two cases cannot be treated as precedents for registrar to initiate litigation on behalf of the Supreme Court, particularly when the judgment in neither case had discussed this aspect. So meaning thereby the institution of the Supreme Court through registrar cannot be a petitioner. This is as I read this judgment about. I'll just there is another thing, na? The other thing is the superior court. The registrar means the superior court is before the high court. So here it's not an hierarchy of Election Commission of Pakistan. I mean, it's a separate constitutional body. So they get a judgment. They cannot appeal it. It's very strange. Either then you say, then they can't be sued either. If they can sue, they can also defend. No, you can sue, but you can't defend. ये क्या बात हुई? No, defend before the court, but you cannot be appellant because ये मुझे इसकी logic नहीं समझ आ रही. Institution, sir, because it is an institution making decision, judicial or quasi-judicial. It is now for the parties in dispute. अगर कोई भी उन्होंने order पास किया कि अपने अकाउंट्स हैं हाई कोर्ट के रिमत दो तो वो तो फिर उसका तो लोग मजाक उड़ाने लगेंगे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का कि आपने हाई कोर्ट का फैसला मान लिया आपने चैलेंज भी नहीं किया तो मतलब ये नहीं हम ऐसा सिचुएशन सॉरी आई कैन नॉट एग्री विद दिस देखें आई विल गो द एक्स्ट्रा माइल टू रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज व्हिच इंक्लूड्स पार्लियामेंट व्हिच इंक्लूड्स the Election Commission of Pakistan. If Parliament enacts unconstitutional laws, we will strike them down. If they do anything unconstitutional, we will set that aside. But otherwise, let everybody operate, empower them to operate within their domain. So, अब ये तो की बात नहीं कि High Court cannot make a mistake. They pass an order again, which is, and they say cut off your hand, you can't go. तो फिर हम ये भी कह सकते हैं आप पिटिशन ही नहीं फाइल कर सकते थे. सर देखिए आपको किसने राइट दिया पिटिशन? मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर जो इस केस में भी सर्विस ट्राइब्यूनल इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी रादर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 212. Their decision was being challenged before the Supreme Court by the Supreme Registrar. It was held no, you can't do that because we are not there to. चलिए आपका point मैंने सुन तो लिया मगर I don't agree with it. Let me be so straightforward and say it. But there can be always situations where I can say the exceptions can be made. I'm not saying ये constitutional body है. सबऑर्डिनेट कोई बॉडी होती है हाई कोर्ट खुद चैलेंज कर रहा है अपना जजमेंट वो आपकी बात सही है कि भाई आपको क्या फिक्र है आपने तो फैसला कर लिया आप अपना जजमेंट क्यों चैलेंज कर रहे हो? बिल्कुल जी ठीक है एग्जैक्टली. अब यहाँ पर एक और एस्पेक्ट है इसी का जी. बिफोर द 18th अमेंडमेंट
before the 18th Amendment. Let me tell you something which may be good news or may be bad news for you. हमें बताया कि इलेक्शन कमीशन has extended the time till 7 PM today for allotment of election symbols. तो जरा सा तेजी करते हैं. उसमें मैं एक गुजारिश करूंगा at the end कि इसको अगर जनाब एक दिन के लिए उनको because the thing is नहीं, आप अपने आर्गुमेंट्स खत्म करें, हम इसको फैसला करें. मैं उसके एंड पर बात करूंगा. मैं इसलिए आखिर में सर इसमें गुजारिश ये थी कि 18th अमेंडमेंट से पहले आर्टिकल 17 में एक शिक थी आर्टिकल 17 उसमें 4 क्लॉजेस होती थी आर्टिकल 17 के. पढ़ ली 17th prior to 2010 before every political party shall subject to law hold intra-party elections to elect its office bearers and party leaders. ये आप पढ़ना चाह रहे हैं ना जी वही अब ये खत्म हो गई है. Every political party shall subject to law hold intra-party election to elect its office bearers and party leaders. Now this was omitted under the 18th Amendment. But it was brought back by 2007 Elections Act. Yes. अब वो election act के तहत. Why I'm quoting this example? As your lordship were pleased to observe yesterday that it is a constitutional body. I'm submitting that after 2010, it is only exercising functions under a statute, not under the constitution. So it is a statutory body for all intents and purposes. So therefore, while interpreting the Election Act, its role is a statutory role, not entirely a constitutional role, because Constitution does not require holding of inter-party elections after 2010. Now this is all under the Election Act or previously under the Political Parties Order of 2002. So therefore my submission would be that ECP, for the purpose of the intra-party election, is now a statutory body performing statutory functions, and therefore these two judgments which pertain to statutory bodies, whether as ombudsman or whether as a competition commission, they are at par with that of Election Commission of Pakistan, exercising this function of regulating the पेशावर हाई कोर्ट का जो जजमेंट है हामिद साहब, उसमें उन्होंने लिख दिया है कि ईसीपी के पास कोई राइट ही नहीं है इंटर पार्टी इलेक्शन के बारे में बात करने का, देखने का. वो एक उनके सेक्शंस में है. तो अगर वो इसको चैलेंज नहीं करते तो वो तो उनके खिलाफ वो जजमेंट होता तो वो तो लॉ ही इनफेक्टिव हो जाता ना बात के लिए. देखिए वो एक और एस्पेक्ट है बिल्कुल, एंड वेरी एबली आर्ग्यूड बाय मिस्टर अली जफर कि it has no jurisdiction. But the question is whether ECP as a constitutional body is any different to other statutory bodies in this regard, in this respect, only in this respect, where it is only exercising statutory function and statutory law. So therefore my submission is, for all intents and purposes, the election ECP performing functions under the Election Act is a statutory body, and has same law applies to it as that of Competition Commission or Ombudsman. Now the next submission is, we see Article 219 of the Constitution. Article 219 provides for various functions to be performed by the Election Commission of Pakistan. If your Lordship kindly consider Article 219. So, opposition to
may read Article 219. The Commission. कई दफा पढ़ लिया, हाँ पॉइंट बताएं. This is the next point is that Article 219 provides for various functions to be performed by Election Commission. वो ई पे रिलाई कर रहे हैं. जी सर. अब इसमें यही मैंने कहना था कि ये जो पहले 3-4 क्लॉजेस हैं उसमें डायरेक्टली उसको फंक्शन ये हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. ई में कहा गया है such other functions as may be specified by an act of Majlis Shura Parliament, meaning thereby the functions the ECP performs and with regard to matters of regulation of political parties, they do not fall within the first 4 clauses, fall within after an act of parliament as a statutory body, it is performing that function. So under Article 219, any अगर आप 220 भी पढ़ लें, हम ECP की कदर नहीं कर रहे हैं. नहीं 220 पढ़िए, आर्टिकल 220. It shall be the duty of all executive authorities in the Federation and the provinces to assist the Commissioner and the Election Commission in the discharge of his or their functions. ये पावर सिर्फ एक और इदारे को है, वो सुप्रीम कोर्ट है. आप उधर आ जाइए आर्टिकल 190 में. All executive and judicial throughout Pakistan shall act in aid of the Supreme Court. तो सुप्रीम इनको इतना ज्यादा इख्तियार दे दिया कि all executive authorities in the federation and the provinces. ठीक है, तो you can't, I mean, IG पुलिस नहीं कह सकता है कि मैं भी तो स्टैट्यूट के जरिए हूँ, आप भी स्टैट्यूट के जरिए हैं, सॉरी मैं आपकी बात नहीं सुनता. उसको सुनना लाजमी है. सर इसका लिमिटेड आर्गुमेंट का एक लिमिटेड फोकस है. मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ whether the powers being exercised by Election Commission with regard to regulation of political parties, is that under E or A to D? My submission is under A, Act of Parliament. Correct. Under E. There's no debate on this. Ji. Yes, sir. 220 is not with regard to functions, is with regard to... But I'm just showing you the importance of this body. Of course, it's not with regard to it, but it has got... Even the High Court can't say this, what 220 says. But only the Supreme Court can do some of it. But they are differently worded. Let me read 190 and 220. पढ़ लिया हमने. हम आपको बता रहे थे कि 220 में देखें, it shall be the duty. All executive and judicial authorities throughout. हमारे पास it shall be the duty के लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुए हैं. Yeah. चलिए कंपेयर ना करें, मगर हम ये कह रहे हैं कि इनके पास बहुत इख्तियार हैं. बेशक, क्योंकि फेयर एंड फेयर इलेक्शन हुई तब सकती है. इसमें कहीं फ्री एंड फेयर की जिक्र नहीं है. एक स्टैंड अलोन प्रोविजन है, इनके इख्तियारात की बात हो रही है इधर. Yes, it can be. Yes, I'm not disputing that. 220 is an important article of the Constitution. अगर ये आपके आर्गुमेंट को तो chisel away your argument. नहीं, अब बात सिर्फ ये है कि उसकी हैसियत एक सिचुएशन में क्या है और दूसरी सिचुएशन में क्या है. कुछ तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की सिचुएशन में है A to D, बट E में it transforms itself into a statutory body by acting under statute. Still it must have all the powers. I'm not disputing that, because without having all those powers it may not be able to carry out its functions. High Court passes a writ, do not exercise powers. वो कहेंगे हम बैठ जाएं घर में बैठे कोई चैलेंज भी नहीं कर सकते ऑर्डर को. ये तो doesn't stand to logic at all. Why? नहीं, चलिए आप दूसरा पॉइंट बताएं ना. ये मुझे I can't, ये आप पहले कल भी यही बात कर चुके थे, मगर I can't agree. If I agree with you, then I completely undermine the status and the constitutionality of the Election Commission of Pakistan. No, sir, I'm not undermining that. I'm only referring to this to show that these two judgments which pertain to statutory bodies will apply to ECP as a statutory body. That is the argument. Limited argument. नोट कर लिया ना, आगे बढ़ते हैं. Limited argument. नहीं, आगे बढ़े ना, नोट कर लिया ना. So that's it. Well, next has been already argued by Mr. But I will show that ECP in its conduct and proceedings have clearly been discriminatory towards Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI.
It has exercised double standards. How do I say it has exercised double standards? I'll draw your lordship's attention. ये कह चुके हैं pages. अली जफर साहब ये बात आर्ग्यू नहीं कर चुके हैं? Partly argued that. Yes. मैं आपके जुरिसडिक्शन में जा रहा हूँ। आप अपने दूर में Partly argued that, but I'm just trying to fortify that argument by referring to these pages, particular pages, page 314 to 316. Kindly consider part 2 of the paper book. Pages 314 to 316 are results of the intra-party elections of PMLN. Pages 318 to 322. ये डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट आपने पिटिशन में कौन सी ग्राउंड में कौन से नंबर में लिया है? इसमें पिटिशन में अपनी पेशावर हाई कोर्ट की petition में there we have clearly taken the position वो of बताएं ना, वो वाला ग्राउंड कौन सा है आपका? grounds before the Peshawar High Court. खुद ECP ने लेना है, उन्होंने थोड़ी लेना है। हाँ वो तो ये आपने आर्टिकल 17 की तो बात की है, आर्टिकल 25 की बात आपने कौन से पैराग्राफ में की है? डिस्क्रिमिनेशन का होगा ये। और जजमेंट में भी डिस्क्रिमिनेशन का कुछ जिक्र नहीं है? जजमेंट में तो उन्होंने फैक्ट्स को टच ही नहीं किया ना। नहीं, जजमेंट में भी डिस्क्रिमिनेशन का तस्करा नहीं है, और मुझे आपकी पिटिशन में सरसरी तौर पे मैंने देखा आपने डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट लिया नहीं है। हो सकता है कहीं लिया, मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो अगर आप वो पॉइंट ना आर्ग्यू करें जो कि ना तो आपने लिया ना हाई कोर्ट ने उसमें कोई फाइंडिंग दी। नहीं, कई चीजें जो हैं सर, दिस इज ग्राउंड W on page 49. 49 Page 49. ग्राउंड W W. आप पढ़ लें। और of the first paper book 1. हाँ, May I read it out? That it is vehemently submitted that PTI has been discriminated against all other political parties who follow less onerous processes of holding intra-party elections in accordance with their own constitution. There are 175 political parties. ECP never examined a single political party like PTI or at all. This is itself violation of the due process of law and violation of the fundamental rights of the petitioner, including the rights protected under Article 4, 9, 10A, 11, 17 and 25. अब आप इसको सपोर्ट करें ना, आपने कोई देखें फिर आपको नहीं, एक सेकंड ये जो नहीं एक सेकंड है ये ना जी जी, फिर आपको इन सब पार्टीज को आप रिस्पोंडेंट बनाना चाहिए था पहली बात। फिर आपको हर पार्टी का केस अलग अलग लिखना चाहिए था। एक फ्लीटिंग स्टेटमेंट से देखिए, अब हम भाई 2021 में तो आप सरकार में थे, तो आपके पीछे ये क्यों दौड़ रहे हैं कि इलेक्शन करवा लें? वो तो सबको कह रहे थे इलेक्शन करवा लो। अभी उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी, परसों हमने केस चलाया है, एक पॉलिटिकल पार्टी ने उड़ा दी, ठीक है, उसका वजूद ही खत्म कर दिया, और ये कह रहे हैं कि 13 और को हमने खत्म कर दिया है। तो ये तो नहीं कि आप ही पे ये कह रहे हैं, आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं इलेक्शन कराएं और कुछ नहीं कह रहे हैं। सर वो अपनी जगह, लेकिन ये आप कहना कि डिस्क्रिमिनेटरी है, तो कैसे आप कह सकते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि आप देखिए 3 और पॉलिटिकल पार्टीज जिसका रिकॉर्ड यहां पर पिटिशनर ने लगाया है, उन्होंने ये शो किया है कि जितने ऑफिस बेयरर्स इलेक्ट हुए हैं सारे अनअपोज हुए हैं। इसलिए जनाब भाई कोई कंप्लेंट करे या खुद नोटिस ले लें? सर बात ये है, ये ECP पिक एंड चूज, कंप्लेनेंट तो हमेशा मिल जाता है, और कंप्लेनेंट यहाँ भी कहीं से हासिल किया गया, वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ जनाब को डिस्क्रिमिनेशन का देखिए, डिस्क्रिमिनेशन इतने हल्के डबल स्टैंडर्ड्स नहीं, डिस्क्रिमिनेशन आपने कह दिया तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ना। नहीं,
कहने से, लेकिन ये कुछ थोड़ा तो आप हमें दिखाएंगे ना भाई। आप ये डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट लिया आपने जब 2021 में उन्होंने आपको नोटिस दी कि मेरे इलेक्शन के पीछे क्यों पड़े हो, बाकी इलेक्शन से भी करवाओ उनसे। बिल्कुल सही नहीं लिया आपने, कहा जी कोविड-19 ने मुझे मोहलत देते हैं साल की, उन्होंने कहा चलें जी साल दे दिया आपको। तो यहाँ से तो पता चलता है कि डिस्क्रिमिनेशन है। मैंने 2021 में इलेक्शन कराया, इंटर पार्टी इलेक्शन, उस पर इलेक्शन कमीशन ने जो है नोटिस ले लिया और उसमें स्ट्राइक डाउन। आपको भी पता है अभी देखिए इलेक्शन ये जो मैटर है आपकी अपनी पार्टी से आवाजें उठ रही है ना, बाहर से उठ रही होती है तो हम कुछ बात नहीं करते। बात ये है अब वो वजूदीन साहब कौन से इलेक्शन करवा रहे थे, कौन सा साल था वो, कितना बड़ा झगड़ा हो गया था। जी वो एक्चुअली मैंने ही कराए थे। उसके बाद एज ट्राइब्यूनल उन्होंने नोटिस लिया था जिसमें 3-4 नहीं, वो कौन से इलेक्शन से, ये इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कब की बात है वो, ये 2012-13। तो देखिए ये कोई बाहर के लोग तो कोई उंगली नहीं रख रहा है ना कि ईसीपी ने तो आके नहीं कहा वजूदीन साहब को कि आप ये गलत हो गया वो गलत हो गया। हम इसी के पास नहीं गए थे, हम ईसीपी की कोई इस मामले में नहीं, तो वो फिर खुद छोड़ के चले गए कि नाराज हो गए, क्या हो गया, वो हुआ था क्या उसमें, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो इज अनदर स्टोरी बहुत। नो बट आई एम जस्ट सेइंग देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ, देखिए सम व्हेन यू रेज bias, prejudice, then we have to see your own conduct and the conduct of the Election Commission of Pakistan. If they pick up you for some targeting you for, you know, every little T that you fail to cross or dot that you fail to put, we have to see the entirety of it. Then election has been whether you like it or not, has been a problem. It's not outsiders. The people from your own founding members have been crying about funding. They've been crying about elections. Let them contest elections. यही मैं कह रहा हूँ, ये इंटरनल मैटर है पार्टी का। पार्टी तो कोई चीज नहीं होती, पार्टी मीन्स द पीपल। वेरी राइटली आर्ग्यूड। देखिए सॉरी, पार्टी मीन्स द पीपल। I don't differentiate between party and the people or the members of the party. उसके तो इंटरनल प्रोसेसेस है, उनको करने दें। आप ईसीपी का क्या काम है कि उसमें इंटरफेयर करें? वो ये राइटली कह रहे हैं इलेक्शन करवा दो, बस ये नहीं कह रहे हैं कैसे कराओ। हाँ, ये उसके पास उन्होंने कहीं लिखा कि इस तरीके से कराओ। पेशावर के जजमेंट को कहीं उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी को टच नहीं किया, बल्कि मेरे हिसाब से तो ये रैम है ये ऑर्डर, क्योंकि ये तो सब पे अप्लाई होगा कि वो अंदर से इंट्रा पार्टी को ईसीपी देख नहीं सकती। इन व्यू ऑफ दिस जजमेंट, इट इज जजमेंट इन रैम इन माय व्यू, इट्स नॉट पर्सोनम। उन्होंने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन का कोई ताल्लुक नहीं है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में ईसीपी बात नहीं करेगी। तो वो तो फ्रॉम द मोमेंट व्हेन द जजमेंट इज पास द लॉ हैज बिकम चेंज। वो जो सेक्शंस हैं और फिर वो खुद कह रहे हैं कि 215 217 के तहत इनको इलेक्शन लड़ने दो, तो दैट वाज द 215 जिसके अंदर शो कॉज दी गई, वो पूरा केस चला है इसका 215 में। जी वो जो 2017 के लॉ के तो इसका 2017 के लॉ देखिए, अब आइंदा कोई पार्टी इलेक्शन कराएगी नहीं जी, इवन डमी इलेक्शन भी नहीं कराएगी। क्या करेंगे, खत्म हो गया है, पेशावर हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया। इलेक्शन क्वेश्चन इज वेदर ए पार्टी इज नहीं, वैसे मुझे एक देखिए बुनियादी सवाल ये है हामिद खान साहब जी, व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ योर ओन मेंबर्स? Not at all. Why can't you give a nomination paper to Mr. Akbar S. Ahmed and whatever 13 other? आ जाओ बाबा, मैदान में उतरो, लड़ो, देखो कितने पॉपुलर हो, 4 वोट नहीं मिलेंगे तुम्हें। सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इसका जवाब तो अली जफर साहब ने पूरी तरह कॉम्प्रिहेंसिवली दिया है कि ये वक्त पे पहुंचे ही नहीं। कह रहे हमारे दरवाजा तो खोल दें कि नॉमिनेशन पेपर दे दें, फिर हम क्या करें उसके साथ? नॉमिनेशन पेपर आफ्टर होल्डिंग ऑफ द इलेक्शन तो नहीं हो सकता ना। अगर मैं इलेक्शन में अपना नॉमिनेशन पेपर ही दाखिल ना करूं तो मैं बाद में ग्रीवेंस हो सकता है मेरा कि मैं इलेक्शन में, अगर आप नॉमिनेशन पेपर दाखिल करते तो बहुत उम्दा इलेक्शन होता। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। इन दिस केस Ali Zafar has already explained he never went to the election commission in time to file his papers, and therefore he cannot now claim that he should have been made a candidate. ये होल्ड एक एस्पेक्ट है। हामिद साहब पेज 20 पे आप जरा सा प्लीज देखिए, पेज 20 पे पेशावर के जजमेंट में द कंबाइंड रीडिंग ऑफ सेक्शन 208, 209 and 215 does not give any impression that ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of political party. तो ये तो इन रैम है, ये सबके लिए हो गया, ये आज के बाद खत्म।
आज के बाद सब पार्टी जो कब्जे में जिस पार्टी के वो कहेगा थैंक यू वेरी मच, मेरा कब्जा रहेगा। ये खत्म ही हो गया ना पॉलिटिकल पार्टी को। अब ECP आज के बाद इलेक्शन क्यों करें पाकिस्तान में, क्यों इलेक्शन? अगर ये बात है, ये जो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है basing it on the autonomy of political parties. Political parties are autonomous within the internal working. तो फिर वो 215 को चैलेंज करके उसको स्ट्राइक डाउन करवाएं, वायरीज खत्म करा दें उसकी 215 की। Then in future no political party will be subject to the inter-party election. If the law it says and the varies are challenged and struck down by any court of law under Article 199. ये नहीं कहा सर, मैं अर्ज करूं, उन्होंने ये कहा है कि ये ऑटोनमस बॉडी है, ये इलेक्शन अंदर से अपने इंटरनल इलेक्शंस कराते हैं, इन्होंने सिर्फ सर्टिफिकेट देना होता है। जिस तरह चलिए ये बातें हो चुकी हैं, कोई नई बात करें ना जी। अभी वी आर नॉट, मैंने लिखना छोड़ दिया। ये नई बात होती है, मैं जरूर लिखता हूँ 3 डॉक्यूमेंट्स। जी जी सर, एक आज डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में तो जो आपकी दुआ, इलेक्शन कमीशन ने आज एक फैसला दिया है, ये प्रोवाइड कर दें कॉपीज प्लीज। ये बड़ा क्लियर केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है सर, अगर इसको देखिएगा जी। ये देखिए, एक पार्टी हमारे सामने नहीं है, आप बेशक चैलेंज कर लें, आप बेशक उस पार्टी के खिलाफ कर दें। देखिए ये उनको फाइन लगा दिया है, उन्होंने इलेक्शन जेल किया है कि ये क्या करें हम, उनको दे दिया राइटली सो। देखिए अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा गलत, मैं हमारे साथ क्यों गलत। हम एक और बात कर लेते हैं जी। मर्डर इज अ क्राइम, मर्डर इज अ क्राइम, नो डाउट जी। एक मोहल्ले में मर्डर हो जाता है, वो थाने जाता है, कहते हैं मैं नहीं रजिस्टर करता हूँ FIR। एक और मोहल्ले में मर्डर हो जाता है, वो थाने जाता है, फॉरेन रजिस्टर कर लेता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं बनेगा इस ग्राउंड पे। कंप्लायंस विद द लॉ कांट बी कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटरी। देखिए, if the law, you can say this law is discriminatory. If at one time, let's even go along with your argument, Election Commission of Pakistan gives a favor to somebody and doesn't do anything, then you call upon the courts to make it comply with the law. You can't say, since that murder was overlooked by this SHO, the other murder in that mohalla should have also been overlooked. या तो कहें ये crime नहीं है, वो एक अलग बात है। तो I'm giving these very basic things. It will not create a right in you. You can take action against the ECP and say, why are you doing this? Or take action against that party कि जी देखें इन पे तो हाथ हल्का रखा है। मगर अगर कानून उनको ये काम की इजाजत देता है, वो आप उस पे फोकस कीजिए ना। डिस्क्रिमिनेटरी, ये डिस्क्रिमिनेशन ऐसे नहीं बनेगा है। लेकिन मैं अर्ज करूँ, एक बेसिक प्रोपोजिशन है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, देयर कैन बी a discriminatory law struck down on that account. There can be a law which is not discriminatory ex officio, but is exercised in a discriminatory manner. Correct. That is equally bad. Correct. Agreed. Article 25 की equal protection. यहाँ मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, जिस लॉ के तहत ये पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी मैनर है। यानी एक पार्टी को तो वो कहते हैं ये सिंबल आपको दे दिया, आपको सिर्फ इंटर पार्टी इलेक्शन ना कराने की सजा में 20,000 रुपए दे दिए। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए। जब इन्होंने आपको 2021 में नोटिस दी थी और फिर 1 साल बढ़ा दिया था, ANP कहेगी आप पे 2 लाख रुपए का फाइन क्यों नहीं लगाया? वो देखिए ना, उधर तो डिस्क्रिमिनेशन आपके फेवर में हो गया ना। जब 2021 में आपको नोटिस दी इलेक्शन कराओ, आपने कहा जी कोविड 1 साल की मोहलत दे दें, उन्होंने कहा चलें जी, उधर उन्हें कोई बगैर फाइन के आपको कर दिया। फिर आप ये भी ANP कर लिया कि वहां तो उनको डिस्क्रिमिनेशन उनके फेवर में कर दिया। कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके, कुछ कॉन्सिक्वेंस। मगर देखिए आपके अपने कॉन्सिक्वेंस, आपका मसला ये हो रहा है ना, ये आपके पीछे पड़े कब से इलेक्शन की खातिर। आज की बात नहीं है, जब आपकी अपनी हुकूमत थी ना। अब आज की बात होती है, आप कहते देखें सेटअप चेंज हो गया या PDM आ गई या कैटेगरीज आ गए, हमें तंग कर रहे हैं। मगर ये जब आपकी अपनी हुकूमत थी, उस वक्त से ये कह रहे हैं भाई इलेक्शन कराओ, और आपने तस्लीम कर लिया मैंने नहीं कराया है, मुझे वक्त हमें टाइम दे दें। हाँ ठीक, तो उधर आपने ये कोई बात नहीं की कि डिस्क्रिमिनेशन है कुछ, और आपको थ्रेट भी दे रहे हैं, अगर आपने नहीं किया मैं आपका इलेक्शन सिंबल ले लूंगा।
सर वो अगर एक ऑर्डर पास किया है वो डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर नहीं था। नहीं मगर आप लीगल बात करें ना, आपने कहा ये तो आप सब फैक्ट्स में जा रहे हैं। नहीं मैं तो फिर exercising powers in a discriminatory manner। नहीं अगर आपने अलाउ कर दिया इलेक्शन सिंबल हमें क्यों नहीं कर रहे? आपने कहा you will attend to some constitutional points which I am not hearing। The point is that they are not treating all parties equally। वो हमें we got it। आगे बढ़ते हैं। जी so ये मेरा कम से कम पॉइंट नोट फरमाइएगा। Discrimination, discriminatory treatment। This party not equally and in a discriminatory manner. One of the examples is that one of the political parties has not held intra-party election, has been given time till May to hold it, and they have also been given election symbol. Why not the same treatment to us? Noted. Yes. As a matter of interest, are you contesting elections this time? आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? नहीं आप जानते हैं? हाँ नहीं मैं तो नहीं लड़ रहा, लेकिन मेरा पर्सनली लड़ने के इसमें कोई नहीं मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। I'm too old to do that physical exercise। because the last one you contested, that's why I wanted to know। मैं एक दफा contest किया है and that was stolen from me। I had won that। No ऐसे पूछ रहे हैं आपसे। थोड़ी वो बात मैं इसीलिए बात वो अपनी पर्सनल ये नहीं बात करता। चलो नेक्स्ट सबमिशन। Now, sir, the way the intra-party elections, they have interpreted as if it is a mandatory provision. It is there in the Election Act, but it is not. My submission is not a mandatory provision. On this, I rely on two judgments already relied upon by Mr. Ali Zafar. ये कवर हो चुका है ना ग्राउंड। इंटर पार्टी इलेक्शन वो उन्होंने भी ये बात की है जी, नॉट मैंडेटरी जी। That provision is not a mandatory provision, and a party cannot be made to suffer or made to be thrown out of election process on that account. This Article 17 is the one that will prevail over any provision of the ordinary law. Correct. So therefore I am relying on both the judgments which have been elaborately read out before your lordship. PLD 1989 Supreme Court 66, Benazir Bhutto's case. Then the other is PLD 1993 Supreme Court 473 Mian Nawaz Sharif's case. Yesterday during the course of argument that before the Peshawar High Court we did not seek declaration that we have held the elections correctly in a valid manner. My submission is, this is one of the objections they have taken. My submission is my petition under Article 199 is not with regard to seeking a declaration. It is with regard to praying before the court that we have held the elections and the ECP's interference is something which may be declared as without lawful authority of no legal effect. In this regard, I'll read Article 199. What do we seek in certiorari? So this is Article 199 1B 1A तो आपने मांगा है ना, आपने कहा इम्प्यून जजमेंट को डिक्लेयर करें इलीगल। ECP के जजमेंट को या ऑर्डर को आपने डिक्लेरेशन तो सीख की है पेशावर हाई कोर्ट से कि इसको इलीगल डिक्लेयर करें, तो डिक्लेरेशन तो मांगा है आपने। आप कह रहे हैं हमने डिक्लेरेशन नहीं मांगा। Yes, sir. It's a settled law that yes, we seek declaration that their act is. What is the point? What is the 199 point? जी. Point ये है that I'm reading Article 199. Subject to the Constitution, the High Court may, if it is satisfied that no other adequate remedy is provided by law, A, on the application of any aggrieved party, make an order. इसमें clause 2.
declaring that any act done or proceedings taken within the territorial jurisdiction of the court by a person performing functions in connection with the affairs of the Federation, a province and a local authority has been done or taken without lawful authority and of no legal effect. I'm seeking that declaration, not a declaration that my elections are valid. They are valid, I presume, and we say their interference is without lawful authority and of no legal effect. So therefore, they are saying that they should have sought declaration from ECP that my... अगर आप strict sense में जाएंगे तो you run into trouble. अब 2 में देखें, declaring that any act done or proceeding taken within the territorial jurisdiction of the court. Now ये तो आप तस्लीम करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास कर दिया इस्लामाबाद में. It's not the territorial jurisdiction of the court. ये अगर हम strict sense में जाएंगे ना तो it will cut both ways. By a person performing functions in connection with the affairs of the federation. They'll say we don't perform functions with the federation, we perform constitutional functions. Yes. Or a province, they'll say we don't do this either, we don't do local government functions. तो ये अगर हम ऐसे interpretation में जाएंगे तो if we go to the strict language, they may come up and say High Court has no jurisdiction on territorial ground and on grounds that we are not doing any of these things. We are doing elections. Is a body functioning in all the provinces. Correct. And the federation. But they can declaring that any act or proceeding taken within the territory. अगर हम strict to sense में जा रहे हैं ना तो इसमें आपका फायदा मुझे नहीं नजर आएगा क्या है? इसका how does it help you? This is only an answer to their objection. Their objection was... they have conceded. In fact, I was surprised, but Mr. Makhdoom Ali Khan conceded. He says, yes, Peshawar High Court has jurisdiction. But having elected to go to Lahore High Court, you could not go to Peshawar. That's what I recollect his argument. I thought he's going to say that it doesn't have a jurisdiction, and he conceded. This is your lordship's impression. Nothing more I have to say about it. सर खत्म करें थोड़ा सा जल्दी करें. बस जल्दी कर देता हूँ. आप बुरा ना माने, हमें बुरा लगता है आपको कहते हुए भी. My submission is it has been held by a number of judgments cited there that the right to participate in an election is a fundamental right of a political party. This has been... ये right वो कह रहे हैं मुझे भी दे दो. आपके जो 14 मेंबर बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं ये राइट हमें भी दे दीजिए प्लीज. जनरल इलेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ भाई. राइट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी टू पार्टिसिपेट. कोई डिनाई नहीं कर रहा है आपका राइट है, वो कोई डिनाई नहीं कर रहा है. वो कह रहे हैं मेरा राइट तो दे दो पहले, फिर आपका राइट आएगा. राइट तो अभी है ना कि अगर ही वाज एंटाइटल्ड टू दैट, अगर वो वक्त पे पहुंचते ही नहीं, यही तो बात है असल. व्हाई ए पर्सन ECP is taking so seriously somebody's complaint in internal working of a party. They know better who is a member, who reached at what time to submit its nomination papers. This is a factual matters should be left alone to the party. ECP has no business to interfere in that. So therefore these matters are factual matters within a party. Actually, unnecessarily, election commissions enter into factual details about the intra-party election, which does not have the jurisdiction, as very rightly pointed out by Mr. Ali Zafar. Now, sir, two more submissions, and that's it. I will not take your lordship's time. ECP... Time you may take, but then you may suffer the consequences. Your lordship was saying that I should conclude early so that... Jeez. Actually, the ECP is targeting the party symbol of PTI. By and again... But ये allegation आपने नहीं लगाया. देखिए, ये allegation target की बड़ा clear on the face of the whole record. It is PTI being picked out of all other parties for intra-party election, entertaining complaint by anybody making any kind of complaint or maybe. So these are why PTI is being picked up. Why they want to deprive it of participation in the election by depriving it of election symbol. That is where it is undoing the democratic process in Pakistan. My submission is that interference and order
passed by the Election Commission virtually takes away the democratic right of millions of citizens of Pakistan who want to vote for PTI and their chosen candidates. Why are they being deprived of because depriving election symbol means you're depriving all those voters who are willing to vote for that political parties and their nominees. This is outbalance all other considerations. Very correctly pointed out by Mr. Ali Zafar, it is against the idea of proportionality, against the very principle of proportionality. For something very minor within a political party, you are punishing millions and millions of citizens of Pakistan. This is maybe a dramatic argument, but can you turn to page 41 of your petition before the High Court? Page 41 of the paper book, which is your petition, and read paragraph 33. That in the meantime, as part of design, 14 persons who are not members of PTI filed a case under no provision of the आपने कहा we are not members of PTI. Yes. So when you're concerned about millions of persons, what harm will be done to if they were contested in election? If you are saying they're not, तो आपने कोई disclosure नहीं कर रहे हैं, किस basis पे आप इनको माना कर रहे हैं? बाकी तो चलें कुछ भी हम मान लेंगे, मगर अकबर अहमद का तो आप खुद तस्लीम कर रहे हैं, फाउंडिंग मेंबर है वो. सर फाउंडिंग मेंबर who turns against his party, तो क्या वो पार्टी उसको रखने की कंपल्शन? देखें, he is not running against it. He is saying do things properly according to law. हो सकता है उनका मौक़िफ़ गलत हो, जी आप पार्टी फंडिंग सही करें, आप इलेक्शन सही करें. अब ये it doesn't mean कि you are, देखें, the greatest strength comes from those who oppose from within. ठीक है कि जी ये ऐसे ना करो. और अमेरिका में भी तो some of the greatest judgments were initially in minority and later on became the majority because they maybe had greater foresight, saw what should have been, and they had greater vision, but they were in a minority, but subsequently with a lapse of time they became in a majority. So ये किधर से आप इनको कह रहे हैं मेंबर नहीं है? आपने कह दिया काफी है. मैं आपको दो नहीं कैसे आप कह रहे हैं मेंबर? दो मिसालें, क्योंकि आपने खुद देखी तस्लीम किया है फाउंडिंग मेंबर है, फिर किधर से चला गया ये? नहीं, at some point in time he come a founding member can have differences with his party and leave the party. That's called democracy. परसों ही एक इंसिडेंट हुआ है. नहीं परसों की बात नहीं कर रहे, केस की बात. नहीं आप इसका जवाब दे देना, आपने किस बेसिस पे तयन किया है कि ये मेंबर नहीं है आपके? इसके ऊपर पार्टी का मौकिफ आया है कि he was given show cause notice. दिखा देना वो show cause notice. सर वो तो लगाया हुआ है. कहीं नहीं लगाया. In any case. नहीं in any case नहीं दिखाई है हमें. देखिए आप, हम सवाल पूछते हैं आप कितने नैनी केस. देखिए 205 में लिखा हुआ है कि आप किसी मेंबर को निकाले तो तरीकेकार भी दिया हुआ है. आप बेशक हम ये नहीं कह रहे कि उसको आप रखें, वो फॉलो किया होगा ना, वो दिखा देते ये देखिए हमने इसको निकाल दिया खत्म. वो तो आपके सामने चैलेंज नहीं हुआ ना मामला के आया. देखिए आपने प्ली ले ली ना, आपने कहा ये मेरा मेंबर नहीं है. वंस यू एडमिट मेरा मेंबर है और फिर क्या मेरा मेंबर नहीं है, बर्डन इज ऑन यू. चलें तो इस पे तो कोई दो राय नहीं होगी ना. चैलेंज नॉट अस. Yes, the party will defend, but let him challenge that. There is no court proceedings under which or any other law under which he has ever challenged that. So why this is a matter within the party? मैं सिर्फ कल आपकी बात का जवाब दे रहा था कि there is a founding member of this party which has publicly joined MQM only 3 days back. So does he remain being he has been consistently for 27 years member of this party. So any person can नहीं हो सकता है कल आप join against his party. नहीं आप ये तो फिर आपने एक प्रूफ दे दिया ना. अब बाबर अहमद साहब के लिए भी प्रूफ दे दें कि उन्होंने फला पार्टी ज्वाइन कर ली, बात खत्म. अब ये आपके देखिए मेराज मोहम्मद खान साहब तो शायद इस पास्ट हुए, अब्दुल अजीज खान साहब
हैं पार्टी में, छोड़ गए थे। मैं मिराज मोहम्मद खान साहब की ही एग्जांपल देने वाला था। ही वाज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ पीपीपी बट ही हैड डिफरेंसेस इन 1972। तो आपकी पार्टी में आ गए ना, he left। आपकी पार्टी में आ गए ना, तो ये नाम आपने लिखे हुए ना, अब ये फौजिया कसूरी साहिबा हैं या चली गई हैं? तो देखिए, जिनके नाम फाउंडिंग डॉक्यूमेंट में, कम से कम आप उनको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते ना। क्यों एक मतलब इस वक्त मामला पार्टीज की इंटरनल वर्किंग का नहीं है। इस वक्त तो ये है कि आया पार्टी को पार्टी सिंबल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। चलिए ये बात आगे बढ़ाए ना, हम ये बात बार-बार सुन चुके हैं। मेरी गुजारिश ये है कि डिनाइंग पार्टी सिंबल, आगे खान साहब वी हैव हर्ड दिस ना, सिंबल वाली बात, वो सिंबल वाली हमने बात सुन ली। अब हमने आपसे एक सवाल पूछा तो आप उसको कहते हैं चलें उसको छोड़ें। 205 सेक्शन 205 है, फिर उसको भी डिक्लेयर कर दें अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन एक्ट का, कि अगर आप मेंबर को निकालना चाहे खुशी से निकालिए, अब कब मना कर रहे हैं? अगर एक तरीकेकार है निकाल लीजिए उसके तहत। सस्पेंशन और एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर 205 में लिखा हुआ है, क्या हम इसको भी इग्नोर करें? आप कहते हैं चलें जी छोड़ें उसको। क्यों छोड़ें हम भाई? वो हमारे सामने खड़े हुए हैं ना, यही तो मसला है। अगर वो नहीं आते, अगर सिर्फ इलेक्शन कमीशन आता तो फिर हम छोड़ देते इस बात को। सर गुजारिश ये है कि अगर यहाँ एग्रीवेंस सेक्शन 205 का है, देन ही वुड हैव बीन ए पिटिशनर दैट he has been expelled। आप दिखाइए ना, मैंने ये एक्सपेल किया हुआ है। वो तो क्वेश्चन जनाब के सामने है ही नहीं है, क्योंकि तो आपने पिटिशन में कह दिया कि मेरा मेंबर नहीं है ना, तो आप ये कहने से बस काफी है? काफी है। पार्टी से नहीं, अगर इसमें इनका डिफरेंस है तो पार्टी को सू करते एंड वुड हैव चैलेंज दैट टर्मिनेशन। मेरा कोई डिफरेंस नहीं है, मैं तो पार्टी में काम करना चाहता हूँ। दैट इज समथिंग टू बी डिसाइडेड by a court if he challenges his termination. That is not being challenged before this honorable court. If you were in his place tomorrow, how would you feel? I will go to a proper court. Why would you challenging go? my No, you should show me. मैं 205 के तहत मैं challenge करूँगा। No, you don't prove a negative. You prove a positive. If they had expelled you, you will go to a court of law and say this expulsion is unconstitutional. If there is nothing there, why should you go to a court of law? You are a member, khatam. The party is denying my membership. He should go and prove before a court of law that no, पार्टी हो फिर को मैं ही डिनाई कर रहा हूँ, तो देखिए सेल्फ सर्विंग आर्गुमेंट तो नहीं चलेगा ना। सेल्फ सर्विंग नहीं, ये चलिए खैर आगे बढ़े। We have to conclude this now. मेरी गुजारिश ये है कि denying party symbol, ये एक अलग बात, is going to disenfranchise millions of voters who want to vote for the candidates nominated by PTI. ये आपने कह दी बात, हमने नोट कर ली। Next point. The result, what is it that is before this honorable court? That is objectives resolution article 2(1) is being violated. देखिए अब एक बात आ जाएगी, do you deprive 850,000 of your memberships for the right of vote? You can't say कि मेरे लिए ये होगा स्टैंडर्ड और दूसरे के लिए ये होगा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड हैज टू बी द सेम। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान इन मिलियंस, 5 करोड़ हो सकता है वोटर हमारे हो, आज बाय दिस एक्ट ऑफ ECP दे आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट टू वोट व्हिच इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 7। खान साहब ये बात हम कितनी दफा सुन चुके हैं ना। ठीक है ना, अब इसको आगे बढ़ाए ना बात को। इसको आर्टिकल 2A के तहत भी देखे ना, हमने पढ़ा हुआ आर्टिकल जनाब की। ठीक है, लेकिन मुझे भी पढ़ लेने दें। हाँ पढ़े मगर टाइम की बात है फिर। 2A, the principles and provisions set out in the objectives resolution produced in the annex as hereby substantive part of the constitution and shall have effect accordingly. अब इसको annex पढ़ेंगे तो उसमें जो पहली चीज दी गई है वो chosen representative की बात की गई है। सर इसमें ये कहा है where in the state wherein state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people. अगर एक political party जिसकी perhaps बहुत बड़ी following है उसको election से बाहर कर देंगे तो फिर उस state को कौन represent करेगा? chosen representative तो बहुत सारे फारिग हो गए। नतीजा क्या है ऐसे election का जिसमें एक popular party with following is deprived
of contesting the election, participating in the election, it virtually deprives and deprives millions of vote of their follower. Even million वाली बात हो गई ना, आगे बढ़ते हैं ना. जी. अब ये हमने we've noted it many times. It's against the principle of chosen representative. अब आखिरी बात मैं कहूँ. Sir, this is a fundamental principle of constitutional jurisprudence, that the Constitution is equally a legal and a political document. जी. So no court, while interpreting the Constitution or its provisions, can ignore the political consequences of its decision. Court or quasi-judicial authority can ignore the political consequences of its decisions, which at times can come back to haunt that body. So therefore, ECP has to consider the consequence of its decision, what will be the political consequences, because political parties have political implications, and Article 17 is there to protect the political rights, and the most important right is the right of vote. So therefore, the entire political polity and the Constitution virtually would disenfranchise tens of millions of voters, which will render the election as and its results as without legitimacy and without credibility. So therefore, depriving citizens of the right of vote will have very, very serious consequences for the future of the country, and will have the assemblies elected without full representation of all the voters and all the political parties, will render the election as not legitimate and not credible. So that is something which I'll appeal before this Honorable Court to see that these consequences should not follow, and this consequence is of a very serious nature, and I'll appeal before this Honorable Court that such decisions at times have implications running into years and years. Today, even today, some of the decisions taken by this Honorable Court, we quote them, that has really hurt our polity over the years. Even 70 years have passed since Maurito Mizutin's case, we keep talking about it. So therefore, every decision being made by the Apex Court has to see what will be its consequences. Thank you very much. Thank you. जी लोग किधर हैं? आप क्या कह रहे हैं? कोई और भी है या नहीं? बिलीव क्या आज है ना, शक्ल दिखाएं. मैंने सुना इन्होंने कहा कि others are in person. I am only representing respond number. Who are the others in person? Naturally वो आप ही की बातें अडॉप्ट करेंगे ना, और तो नहीं करेंगे. I have to disclose that before the commission, I did represent, but I have not been instructed to represent them today before this court. मैंने उनको commission में आइडेंटिफाई तो करा सकते हैं, वो भी नहीं करा सकते हैं. जी मेरा नाम यूसुफ अली है. एक सेकेंड. साबिका इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी. एक मिनट. क्या नाम है? यूसुफ अली. जी आप क्या हैं? मैं जी 2013 इलेक्शन में जनरल सेक्रेटरी था, जो इलेक्शन अहमद खान साहब ने करवाए थे. किस पार्टी के हो? लेकिन साहब जी बचपन से. अच्छी बात है. 2013 का जनरल सूबाई इलेक्शन भी मैंने लड़ा है तहरीक इंसाफ से. पीए एमपीए स्वाबी वन से. स्वाबी वन से. हाँ जी. आप जीते थे, हारे थे? जी मैं हारा था. ठीक है, तो आपको क्या इंतखाब में हिस्सा लेने दिया या नहीं दिया इन्होंने?
मैं जी ऑफिस गया था, जिसकी वीडियो भी बनी है, सेंट्रल सेक्रेटरीट। हम भाई आप वीडियो को छोड़े, आप बता देना, जबानी बताइए। मैं गया था, मैं उधर ऑफिस में जो लोग थे हमने उनसे मालूमात चाही। हमसे पहले भी उधर लोग, अब बलूचिस्तान के लोग भी आए हुए थे सुबह से कि हमें नॉमिनेशन पेपर चाहिए, हम इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो उस किसी के पास कोई जो है मालूमात नहीं थी। तो फिर इलेक्शन कमीशन में आप लड़ना चाह रहे थे इलेक्शन? हाँ जी बिल्कुल लड़ना चाह। आपने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली है? नहीं नहीं नहीं। ठीक, अगला कौन है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी महमूद अहमद खान है। महमूद अहमद खान। मैं PTI में 2006। महमूद अहमद खान जी। जी, मैं 2006 से PTI में दोहा कतर में जब था तो मैंने ज्वाइन किया था, और खान साहब का वहाँ मैंने फंक्शन भी करवाया था रमादा होटल में। और 2010 में मैं रिटायर होके केम डाउन टू इस्लामाबाद एंड स्टार्टेड वर्किंग विद PTI इस्लामाबाद जी ऑफिस। एज व्हाट? मेरा थोड़ा सा आप क्या करते थे उनके दफ्तर में? क्या काम करते थे? काम क्या करते थे आप? I joined them as an ordinary member. Then I was given the 2 tasks. I was made in charge of the media, and I was also made coordinator of Islamabad. Coordinator. तो आप अब किस पार्टी में हैं? अब किस पार्टी में हैं आप? PTI में मैंने जिंदगी में एक ही पार्टी ज्वाइन की है, उसी में रहना है, उसी में रहूंगा। That is PTI असल। आपको इलेक्शन लड़ने दिया या नहीं दिया? इंटरनल इलेक्शन का बिल्कुल मेरा इरादा था, और बात ये थी कि मैं किस बात का इलेक्शन लड़ूं। मुझे कई पोजीशनों का नहीं पता था, मुझे प्रोसेस का नहीं पता था, मुझे लिस्ट का नहीं पता था। मैंने इलेक्शन, मेरा प्रोग्राम था, मैं इस्लामाबाद से हूं तो मैं फोकस इस्लामाबाद पे करूंगा। लेकिन देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन। पेपर दिया आपको या नहीं दिया? नॉमिनेशन पेपर दिया या नहीं दिया? नहीं सर, नहीं। इन्होंने अनाउंस ही नहीं किया कि कौन कौन सी पोजीशंस का इलेक्शन होना है। नॉमिनेशन तो उसके बाद आता ना, पहले ये बताते कि ये इलेक्शन पोजीशन है। इनको आपसे क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है। इनको क्या प्रॉब्लम है आपसे कि आपको नहीं दिया? ये तो उनसे पूछे। मुझे शायद, मैं डेमोक्रेटिक, आई बिलीव इन डेमोक्रेसी। आई बिलीव कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक राइट होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट करना चाहिए, पार्टी में फाइनेंसेस क्लियर और उसका क्लियर ऑडिट होना चाहिए। ये कल्ट में कन्वर्ट ना करो। We want democracy in the country, and it starts from the party. And if there's no democracy in the party, there will be no democracy in the country. ठीक है, क्या वो आप बीबी को बताएं, अपना तारुफ कराइए। ये कौन सी रेस्पोंडेंट? नंबर 11। नाम क्या आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नौरीन फारूक खान। आप किस पार्टी में हैं? जी मैं PTI मैंने 99 में ज्वाइन की थी और बहुत सारे ओहदों पे रही हूँ। मतलब कराची। आप किस ओहदे पे थी या ओहदा नहीं था? नहीं, मैं भी आपको सारे ओहदे बता देती हूँ। मतलब 99 में एज अ वुमेन विंग की प्रेसिडेंट मैं कराची की थी। उसके बाद एक जरा आहिस्ता, वुमेन विंग प्रेसिडेंट कराची। उसके बाद फिर 2003-04 से मैं इमरान इस्माइल साहब जो कि सिंध के प्रेसिडेंट थे, उनकी सिंध की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट थी। जी 2009 में हमारा लेबर विंग बना, तो उसमें मैं पहले तो पंजाब की एज ए जनरल सेक्रेटरी आई। 2009 पार्टी का लेबर विंग बना जिसके प्रेसिडेंट थे जुबैर खान, तो उनके साथ मैं पंजाब से पहले आई, फिर लेकिन उन्होंने मुझे मरकज में ले लिया अपने साथ, प्रेसिडेंट वुमेन विंग लेबर। उसके बाद फिर लेबर पॉलिसी कमेटी बनी हमारी, जो कि राना समी साहब थे, उनके साथ मैं लेबर पॉलिसी कमेटी की भी मेंबर थी। लेबर पॉलिसी कमेटी। Then afterwards, एक सेकेंड, लेबर पॉलिसी कमेटी। उसके बाद नईमुल हक साहब इधर शिफ्ट हुए कराची से, मतलब he was died 2 years back. नईमुल हक चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑफ इमरान खान। तो I used to assist him in the central office as his executive assistant. Central office executive assistant to chief staff officer मिस्टर नईमुल हक। जी नईमुल हक। और उनका डेजिग्नेशन क्या था? जी वो चीफ स्टाफ ऑफिसर थे इमरान खान के till he was the prime minister till he died। नहीं, पार्टी में क्या होता था? वही चीफ स्टाफ ऑफिसर थे, मतलब he was managing time of इमरान खान चेयरमैन। अब आप किस पार्टी में? मैं इसी पार्टी में हूँ, और लास्ट जो इंसिडेंट हुआ है जिस दिन इमरान खान साहब को इधर अदालत में पेश किया गया,
और उमर अता बंदयाल साहब की उसमें, तो आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द सुप्रीम कोर्ट, जिसकी मेरे पास वीडियो भी है, और मेरे साथ थे हमारे दीर अपर दीर। नहीं, अभी आप इलेक्शन लड़ना चाह रही थी कि पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि एज पार्टी पॉलिसी और पार्टी के आइन के मुताबिक कि हर पर्सन को राइट है इलेक्शन का, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सबमिसिव किस्म की बंदी हूँ, मतलब शराफत ईमानदारी से चलने वाली। तो मैंने कहा शायद इस तरह मुझे मौका मिल जाए कि मैं किसी तरह किसी उस पे आ जाऊं कि मैं हाईलाइट हो जाऊं। तो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांटेड टू कंटेस्ट द इलेक्शन। और मैंने ऑफिस फोन करके भी पूछा, मतलब वहां पे जो बैठे हैं, आई विल नॉट कोट देयर नेम्स, बट दे सेड इट कि मैडम ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस आप समझे इलेक्शन ऐसे ही हो रहा है। तो देन आई सेड ओके। और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ और जिस तरह हुआ वो आप सबके सामने है। नहीं, हमें नहीं पता कुछ, आप कुछ कहेंगी तो पता चलेगा। चले, वो तो जो भी हुआ है जैसे भी हुआ है, क्योंकि आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट G8 में है, तो ये था कि मरकज के G8 में क्या कोई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, उसके पीछे बहुत खुली जगह, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह। आज G8 में कोई घर है या नो, इट्स अ बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग। नो, अपनी बिल्डिंग बनाई है PTI ने। कितनी मंजिला है? आई थिंक 3-4 मंजिला है। ऊपर टॉप फ्लोर पे काफी उसके स्पेस है और पीछे बहुत बड़ा लॉन है। अच्छा, ठीक। तो बाकी है कि मुझे इलेक्शन आप लड़ना चाह रही थी? जी बिल्कुल, मैं लड़ना चाह रही थी। और सेकेंडली बात यह है कि मुझे नेमुल हक साहब लेट और इमरान खान साहब भी कहते थे ये मेरी पार्टी का असासा है और मेरी बहुत पुरानी नजरियाती कारकुन है, और मुझे कहते थे ही इज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ PTI, कि आप इससे पूछ लें कि किसने कब ज्वाइन किया और किसका क्या बैकग्राउंड है। अच्छा, चलें। और कौन साहब? आपका नाम? बिलाल अजहर राना जी। बिलाल अजहर राना। अजहर राना, ठीक जी। मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ। 25 अप्रैल 1996 को पार्टी बनी तो उसी टाइम। बिलाल अजहर राना। इसमें तो आपका नाम नहीं आ रहा है फाउंडिंग डॉक्टर। ये फाउंडिंग में मैं वाद बंदा हूँ जो मेंबर हूँ, मतलब ये है कि फाउंडिंग लीडरशिप में नहीं हूँ। आप कब से पार्टी में? पार्टी मैं 25 अप्रैल 1996 को पार्टी बनी तो 2 हफ्ते के बाद हमने तारीखी जलसा पहला टेक्सला के मुकाम पे। नहीं, वो कौन सा साल था? 10 मई 1996 को। उस वक्त से आप पार्टी में? कोई और पार्टी ज्वाइन की आपने? नहीं, मेरी 18-20 साल उम्र थी, मैंने पहली पार्टी जो है वो बनाई भी, इसमें काम भी किया। और लाहौर में अगर पहला जलसा हुआ 97 में, यानी कि पहला कॉर्नर में, कोई ओहदे पे गड़ी चाव में। कोई ओहदे पे थे? पार्टी के ओहदे पे कोई थे? ओहदे थे तो एज अ मेंबर, एज अ कंपेनर मैंने काम किया, क्योंकि पार्टी इतनी छोटी सी थी। अच्छा, तो आपने कोई ओहदा नहीं रखा है? मैंने कोई ओहदा नहीं देखा। आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे या नहीं? अपने लोकल एरिया में हमने वार्ड। नहीं, अभी जो इलेक्शन हुए इनके, अभी मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे या नहीं? इलेक्शन लड़ना चाह रहा था। मैं गया था सेंट्रल ऑफिस, और 1 दिसंबर 2023 को। तो क्या हुआ वहाँ? तो मुझे ना वोटिंग लिस्ट दी गई, ना फॉर्म दिया गया, कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा कि क्योंकि असल बात ये थी कि टेक्सला और वहां से हमने यानी कि इसकी बुनियाद रखी थी, ज्यादा शुरुआत जो थी, तो हम ये चाह रहे थे कि ये आप टेक्सला से हो? टेक्सला से जी। तो ये हालिया दौर में ये जो है पिछले साल वाकयात हुए जिसमें लोग PTI में आए थे, वो फिर भाग गए यहाँ से। तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी करना चाह रहा था, और मैंने कहा कि इलेक्शन लड़ता हूँ पार्टी के लिए। ठीक। और कौन रह गए? सब हो गए? मोहम्मद मुजम्मिल सिंधु सर। आपका नाम क्या है? सर मोहम्मद मुजम्मिल सिंधु। सर मैं टोबा टेक सिंह से चेक नंबर 312 गाबे से मेरा ताल्लुक है सर। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था अपना UC 81 से टोबा टेक सिंह से। UC 81 टोबा टेक सिंह से मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था PTI का सर। कब? और 2018 कब थे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट? सर ये 3 अक्टूबर 2020। फिर उसके बाद और मुस्तकिल रहे आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट? 2018 के जनरल इलेक्शन में मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी था मिडिल गर्ल्स कॉलेज में PTI की तरफ। कौन से इलेक्शन में? जनरल इलेक्शन में 2018 के। आप किधर थे?
टोबा टेक सिंह 312 का ऑफिस। जनरल इलेक्शन के आप क्या थे? प्रिजाइडिंग ऑफिसर था पीटीआई का। प्रिजाइडिंग ऑफिसर। बल्कि मैंने फॉर्म भी अप्लाई किया हुआ था इलेक्शन कमीशन में, मुझे उसकी तस्दीकी कॉपी दी जाए लेकिन प्रोवाइड नहीं की गई। अच्छा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। फिर क्या हुआ? आपने इलेक्शन भी लड़ाए? जनरल इलेक्शन? मैंने यूसी का इलेक्शन लड़ा था। हारे जीते? जी मैं 3 वोटों से दानली से हराया था। नहीं वो छोड़े, कौन सी यूसी? 81 से सर। ये कहाँ की है? ये तो बट टेक सिंह से सर। अच्छा, ये कौन सा इलेक्शन था, कौन सा साल था? ये 2015 सर। ये आप पीटीआई के टिकट पे बैठे? नहीं सर, उस टाइम मैं आजाद हैसियत से लड़ा था। आपने पीटीआई कब ज्वाइन की? सर 16 में। ज्वाइन इन 2016। अब किस पार्टी में आप? सर पीटीआई में। छोड़ी नहीं है? नहीं सर। पक्की बात? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई और रह गए? सारे खत्म हो गए? आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे इंटर पार्टी? जी जी बिल्कुल सर, मैं 1 दिसंबर को पीटीआई सेंट्रल ऑफिस गया था और 4:30 बजे मैंने इनसे फॉर्म मांगे थे, नहीं मिले थे। 30 नवंबर को भी मैं गया था, इनका उधर के जो लड़के उधर नुमाइंदगी करते हैं पीटीआई सेंट्रल ऑफिस के, उन्होंने कहा जिनको खान साहब बनाएंगे वही बनेंगे, कोई फॉर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं। तो खान साहब आपसे नाराज हैं क्या? सर बस सच बोलने में नाराजगी हो जाती है ना जमातों में। आपने सच बोल दिया, ऐसा खतरनाक सच? बस सर कुछ इश्यूज चल रहे थे टोबा टेक सिंह में, तो वो उधर मैंने उनको हाईलाइट किया था, तो उस पर जरा मेरे से नाराजगी चल रही थी। चलें ठीक है, ओके। My lord, may I make short submissions on very short? Very short. I'll be as brief as I. You were very short earlier also. I'll try to match that time or lesser. First of all, my lord, may I quickly take the court to the CMA 171 that I filed. A copy has been provided to. जी मिला ये 171. जी. As my lord will observe, my lords will observe, and lady, मैंने इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीटीआई की कॉपी जो 1999 में अप्रूव हुई थी वो पहले लगाई है, और उसमें पहला सफा जो नंबर 3 ऑफ द पेपर बुक है उसमें कमिटी जो कि कॉन्स्टिट्यूट कमिटी थी जिसने ये आइन साजी की थी, जिसके चेयरमैन हामिद खान साहब थे जी, वो इनके तमाम नाम हैं। इसमें नंबर 1, नंबर 4 आर नो लॉन्गर विद अस, with us, meaning they've passed away. Okay. Number 2 is in Canada and inactive. Number 5, I'm instructed also, is inactive. Number 7, 9, 7, 9, 10 and 11 have left party. Ji, only Mr. Hamid Khan, the chairman here. He left PTI. Have they joined other parties or they just? They have left the party. I have not been instructed कि current उनकी membership क्या, but they are believed to be no longer with the party. They have left the party. Chairman साहब, Saidullah Khan Niazi साहब, number 3. Who's he? He is also a founder member. Where is he? He is in Islamabad. I only see him occasionally on TV. He is a very vocal spokesperson, very active in the party. I believe he's still in the party. Ji, bilkul. Dr. Alvi, President Dr. Alvi. The president, ji. Akbar S. Babar. Ji, they are very much. Okay. Ji. Also, I have attached a copy of the interim constitution from page 36 onwards to demonstrate the level of involvement. Page, what is the page? 36. Okay, fine. What? This is a letterhead written to. No, why are you showing its relevance? To demonstrate that जो फॉर्मेशन है, मतलब नाम का फाउंडिंग मेंबर नहीं हूँ, एक्टिवली मिलके हामिद खान साहब के साथ और दीगर लोगों के साथ आइन साजी में एक्टिव रहा हूँ, और उसकी ये एक्नॉलेजमेंट लेटर है। जो मौजूदा आइन है इससे फर्क है जी, बहुत इसके बाद काफी आइन बदलता रहा है, और अब ये इशू जनाब के सामने नहीं आया, इलेक्शन कमीशन के सामने आया था। देवर अपेरेंटली मोर देन वन वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक 2019 की जिसके ऊपर इलेक्शन होना था, एक वो अमेंडेड वर्जन जो कहा गया अंसारी साहब थे वापस ले ली, अमेंडमेंट हुई, और फिर तो देयर हैव बीन मल्टीपल वर्जन्स। बट शुरू में पैनल था या शुरू में पैनल नहीं था जी, पहले ये बात की है जी। आई डू नॉट हैव द ट्रैक लाइन ऑफ द
constitution amendments from day one, but I believe the panel system has been introduced later. और कोई बात? जी, नंबर 3 पे सर एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है, पेज 58. जी, ये जिस सिंबल का जिक्र हो रहा है, ये खत में इमरान खान साहब चेयरमैन ने मुझे अकबर एस बाबर को ऑथराइज किया था कि ये सिंबल की दरखास्त. रीड, आई कांट सी योर नेम, रीड इट. जी, इसमें आप दिस लेटर इज रिटन टू द सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिंबल. इसमें ऑथराइजेशन है, माय अपॉलॉजीज जी, इमरान खान साहब का सिग्नेचर है और इसमें सिंबल के लिए जो मुख्तलिफ बैट टाइगर सारा है कि ये हम अप्लाई कर रहे हैं. और इसके आगे मैं, आपका नाम कहाँ जी, मैं वो एनेक्स में है, वो मैं दिखा रहा हूँ पेज 61 पर. Mr. Akbar S. Babar, Central Information Secretary, Pakistan Tehreek-e-Insaf, is hereby authorized to submit the required documents of Pakistan Tehreek-e-Insaf to the Election Commission. So ये जो application भी थी, मुझे ऑथराइज. पार्टी कब बनी, कौन से साल में? पार्टी तो जी मिड 90s में बनी. ये आइन जो है 99 में आया. और ये सिंबल ये 2002 में क्यों आ रहा है? पहले क्या सिंबल था? I'll have to get instruction on that. ठीक है, तो ये 61 हो गया. और कोई बात? जी, और इस पे मैंने फिर एक सैंपल लगाया अनदर फाउंडिंग मेंबर को पेज 63 पे कि जब शो कॉज देना होता है तो किस तरह शो कॉज दिया जाता है, पेज 63 पे. चलिए, खैर वो तो अलग बात है. और उससे जो किसको शो कॉज दिया है? दिस शो कॉज वाज टू मिस्टर अहमद खान. क्यों? He said something that the secretary at that time did not like. He perhaps spoke truth to power as he always does. पहला पैराग्राफ क्या है? It has been noted by the undersigned that the chairman of the party, Mr. Imran Khan, that you have repeatedly in the print and electronic media spoken against the maligned, defamed the party without any justification and on the basis of fake and false allegations which amount to mala fide. Whereas you are hereby charged. इसमें जो मैं जो ये कब की बात है? This is December 1, 2019. इसमें जो it was reported that Khan Sahab had responded very strongly to the show cause notice. Or on page 65, I just want to read one line. This is 64 से पढ़ लेना. Will not quit party under any जी, मैं उसी का जो मेन कोट था वो कर रहा था. So दुख की ये बात है कि a different measure, a different standard, a different argument is being presented for a co-founder. This is very painful to observe. इसमें आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? 65 ये जी के let me make it loud and clear that I will not quit the party under any circumstances. So why is there a different measure of the application, the interpretation of the law for Akbar S. Babar? He has made it clear over the years he is not going to quit the party. If you want to turn him out, follow the law, give a show cause notice, let him defend it, turn him out. He is bound, like I. show cause notice का क्या बना? I have जो public knowledge है जी, खान साहब में भी उसके अलावा 2 अजाफी कागजात जो मैंने जमा कराए हैं, ये वो जजमेंट्स हैं. एक फैसला इलेक्शन कमीशन का और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें मेरा मेंबरशिप का क्वेश्चन एज अ फैक्ट एस्टैब्लिश हो गया कि मैं मेंबर हूं. पार्टी इसको कॉन्ट्रोवर्ट नहीं कर सकी. इस पेज पे जी, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट 68 से जनाब. सिर्फ वो जुमला बता दें. जी, मैं उस पर इसमें आप रिस्पोंडेंट थे जी. ये वो मैटर है फॉरेन फंडिंग का, जब मैंने कंप्लेंट उसमें दायर की थी और उससे जो लिटिगेशन एमिनेट हुई, वहां पर भी ये कहा कि ये मेंबर नहीं है, इसकी शिकायत मत वसूल करो. तो ये we went to the whole membership story multiple times and here. Where is it held that you remember? जी, in paragraph 10. In view of the above, it is confirmed that paragraph 10 पेज बताइए. Page 71.
फिर ये 10 से शुरू होता है जी, 11 में भी इसका डिस्कशन है, और 13 पे आ जाता हूँ, 73 पे, टू कट इट शॉर्ट, पैराग्राफ 13 ऑन पेज 73. In view of the above referred section 7, the petitioner has not produced any single document which would come under the definition of a show cause for suspension or expulsion of the membership of the political party, although there is no doubt that respondent number 2 was relieved from his duties of Central Information Secretary, and he himself acknowledged the same through his email dated 11/9/17. But for expulsion or cancellation of membership, it requires show cause notice, which was never been issued in case to respondent number 2. ये जजमेंट की तारीख क्या है? ये फैसले की तारीख है जनाब 18/7/2018, which is evident on page 68. इसकी उन्होंने अपील की? There was an ICA, and I believe that इस पॉइंट पे अपील नहीं. This question has never, this determination has never been overturned to date. There have been at least 11 rounds of litigation before the Islamabad High Court since. Why? For what? On every point at the ECP, कभी jurisdiction नहीं है, कभी मैं member नहीं हूँ, कभी उनका ये इख्तियार नहीं है, कभी उनका वो इख्तियार नहीं है, writ होती रही है. If my lord wishes, मैं वो list of litigation भी file कर सकता हूँ, मेरे पास वो handy होगी. At the end of the day, उस litigation का बना क्या? उसका बना ये कि स्क्रूटनी अलाउ की गई, स्क्रूटनी हुई, फाइंडिंग ऑफ फैक्ट हुई कि सोर्सेज, प्रोहिबिटेड सोर्सेज से पैसे आए. बना शो कॉज नोटिस पे फिर रुक गए जी. स्टे ऑर्डर चल रहा है. I have not been associated in the show cause proceedings. I have आपके क्लाइंट हैं, उनको पता होगा. नहीं, he has not been associated because now the argument. Client, where is he? हमें डायरेक्ट ना एड्रेस करें, आप पूछ लें उनसे. जी पूछ लें. मैं गुजारिश पूछ तो लेना. आपको तो शो कॉज की प्रोसीडिंग में आपने हिस्सा नहीं लिया है. नहीं, उसमें ये बता दीजिए कि जो फॉरेन फंडिंग का फैसला था अगस्त में, उसके बाद 5 अगस्त को शो कॉज दिया. उसके बाद PTI ने चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो लार्जर बेंच बना, 2 फरवरी 2023 में डिसमिस हो गया, एंड दैट इज वेयर इट स्टैंड्स. वो ये कह रहे हैं जी कि शो कॉज के बाद दे चैलेंज इट बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसमें एक लार्जर बेंच बना, बट वो भी उनकी दरखास्त डिसमिस हुई वहां पर. तो अब इनके इल्म के मुताबिक कोई अमर माने नहीं है. बट आई हम्बली सबमिट. शुरू कब हुई ये कंप्लेंट आपकी? नवंबर 2014. First hearing, I believe, took place in January. It was filed in November. The first hearing took place in January 2015, and then successively chalti rahi. And then the round of litigation began later in that year, and it has been going on and on, sir, since then. जी सर, ये पहला पॉइंट है of the documents. और कोई बात? जी सर, ग्राउंड्स बताए गए कि अभी कहा कि जी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली जवाब दे दिया है कि क्यों अकबर बाबर को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया. कम से कम 4 रीजन बताए गए. इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि नॉट अ मेंबर एक दफा कहा गया, फिर कहा गया डिड नॉट पे 50,000 रुपीज, फिर कहा गया ही केम लेट, फिर कहा गया ही डिड नॉट कम विद अ पैनल. नहीं, देखिए वो जरा कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशंस ले रहे हैं ना जी. एक तरह तो उन्होंने लिख के तो कहा है कि आप मेंबर नहीं है जी, तो जब मेंबर नहीं है तो फिर उनको भगाएं, मतलब वो फिर नॉमिनेशन पेपर का सवाल ही नहीं पैदा होता है. बिल्कुल वो फिर ये मतलब बड़े रिलक्टेंटली हामिद खान साहब तो कंसीडर्ड वेरी फ्रैंकली दैट ही इज द फाउंडिंग मेंबर. उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता इसके बाद क्या हुआ. यस. अब पेज 220 अगर देखिए रेट में कहते हैं ना कम टू कोर्ट विद क्लीन हैंड्स. उन्होंने कहा कि जी आप लोग मेंबर्स नहीं है. ये गलत है. अब बेशक अपोज करें आपकी पिटिशन, वो तो हक है सबका, मगर फैक्चुअली तो बताएं ना सही बात. बिल्कुल. फिर आप यस बिल्कुल आप कहें कि जी मेंबर हैं मगर इनको कोई इख्तियार नहीं है, जो भी बात करें, तो ये जरा सा हमें ये जरा फर्क बताइए ना. जी बिल्कुल. तो इन्होंने कोई पेश किए सबूत? नहीं सर, नॉट टू माय नॉलेज. तो आपसे सो गिला है तो बाकी जो आए 5-6 लोग, इनसे क्या मसला है? जिस तरह उन्होंने कहा सर, माय रिकलेक्शन इज, उन्होंने ये बयान शायद नहीं किया है. जब इलेक्शन कमीशन में बहस हो रही थी तो उन्होंने अपने मेंबरशिप के कोई फॉर्म्स या इन्होंने कुछ चीजें उधर शो की थी. सो इफ माय लॉर्ड विल आस्क देम, दे विल बी एबल टू शो द कोर्ट कि क्या एविडेंस थी ऑफ देयर मेंबरशिप. अच्छा, और कोई बात? जी. पेज 231 पर जो मेरी कंप्लेंट है इलेक्शन कमीशन को, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि दिसंबर 1 को 4:45 पर मैं गया. This is well within the time of the nomination papers. So I do not know where they page 231.
Paragraph 3, on December 1, 2023, around 4:45 p.m. in the afternoon, I, along with a delegation of PTI members, visited PTI Central Secretariat located in G8 sector of Islamabad. Now, इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड तलब किया है जनाब ने, उसमें वीडियो एविडेंस है, उसमें वाजे है कि वो विद इन टाइम देयर वाज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल देयर। तो शायद खुद कह रहे हैं, मान भी रहे हैं कि आप गए थे, बट अभी मे बी आई मिस हर्ड कि उन्होंने कहा कि जी वक्त के बाद आए हैं। मुझे तो वक्त के अंदर आए हैं, यहाँ लिखा हुआ है, इसको चैलेंज पहले नहीं किया, आज बिलेटेड चैलेंज है। वो इतनी बारीक चीजों में हम नहीं जाएंगे। जी बेहतर। अगली गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ सर कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है ये करा। तो ये कह रहे हैं कि चले भाई वो इलेक्शन गलत हो गया मगर मुझसे सिंबल तो ना लें। मैं उस पे क्या आप कहते हैं? जी 215 को अगर इजाजत दे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उसकी करेक्ट रीडिंग प्रेजेंट नहीं की गई। करेक्ट रीडिंग कुछ यूं बनती है, notwithstanding anything contained in any other law, a political party enlisted under the act shall be eligible to obtain an election symbol. एलिजिबिलिटी सर मैं रुकता हूं, यहां पर एलिजिबिलिटी मेजर है, यहां पे ऑटोमेटिक ग्रांट ऑफ सिंबल नहीं है। आप अपने जुरिडिक्शन जी कौन से पेज में सर? मैं सेक्शन 215 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट पढ़ रहा हूं। 215 अच्छा, जो ये कह रहा है कि आपकी एलिजिबिलिटी टू ऑब्टेन अ सिंबल का स्टैंडर्ड है। आर्ग्यू ये किया जा रहा है कि ग्रांट हो गया। आपका पॉइंट क्या है कि अगर ये दस्तावेजात जो कि कानून कहता है कि आपने सर्टिफिकेट्स देने हैं, तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे टू ऑब्टेन ए सिंबल, बट यू डू नॉट ऑटोमेटिकली गेट अ सिंबल ग्रांटेड टू यू। और यहां पर जो पॉइंट मैं गुजारिश कर रहा हूं कि व्हेन द मेजर ऑफ एलिजिबिलिटी इज ब्रॉट इनटू ए क्राइटेरिया, देन समवन हैज टू डिटरमिन whether or not you are eligible. If I am 5 years old and wants to run a 100-meter Olympics race, somebody will determine whether I am eligible to do that. So, इसी ज़मीन में सर एक और गुजारिश है कि रूल 15 का हवाला दिया गया, जो इलेक्शन रूल्स के इन्होंने अपना PTI के अपने इलेक्शन रूल्स हैं, उसमें भी वो छोड़ें, दूसरा पॉइंट बताएं। उसमें बड़ा लिखा आफ्टर का लफ्ज है, उसमें वो जनाब नोट कर लें, आफ्टर he announces। ये एक्चुअली क्योंकि इस पे बहुत इन्होंने लेबर किया पॉइंट, आई विल नॉट टेक मोर देन 30 seconds। The Federal Election Commission shall declare the result of concerned panel or chairman, as the case may be, at the notified polling day at the polling venue after taking objections. They have not showed what objections, if any. They even asked anybody कि कोई objection तो नहीं है election में, or from the members, or votes present at the venue. ये किधर से आप पढ़ रहे हैं? ये मैं page 100 of the PTI rules. Where will we find them? On our books? जी page 100 of the petition, page 100 जी। जी ये शुरू होते हैं पेज 98 पे टाइटल एंड 115 रूल 15 जो जनाब के सामने पढ़ा गया। The Federal Election Commission shall declare the result of concerned panel नंबर क्या पढ़ रहे हैं? 15 as the case may be at the notified polling day at the polling venue after taking objections from the member or voters present at the venue. So they have not discharged the burden of after जो नहीं, ये तो फिर उनका जवाब बनता है। वो हमने जब उनसे पूछा कि जब अगर सारे अनअपोज आ गए तो फिर आप जाके मीटिंग क्यों की वहाँ चमकनी में, तो वो तो इस पे रिलाई कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट करता। मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिलाई जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये उनके हक में बात नहीं कर रहा है। ये अभिषेक, ये बेसिकली अनअपोज का जो फॉर्मूला या मॉडल या मेथोडोलॉजी यहाँ प्रेजेंट की गई है, ये इन रूल्स की भी मंशा मुझे तो नजर नहीं आती, बट दैट इज फॉर माय लॉर्ड्स टू कंसिडर के क्या है। अगला जो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सर, इट्स अ हाउस कीपिंग एस्पेक्ट। आइन की, पीटीआई के आइन की एक शिक है जो कि पेज 171 पे जनाब के सामने आएगी।
हम बारीकियों में आपको भी आप ले जा रहे हैं, हम अवॉइड कर रहे हैं चीजें। जी 171 पे क्या है? ये मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब ने सवाल पूछे कि पेशावर में पिटीशन क्यों हुई, किसने की, लाहौर में क्यों हुई, किसने की, उसका आप क्या जवाब देते हैं? मैं देता हूँ। मैं पहले कहना है कि मैं जा सकता हूँ कहीं भी। I will defer and support the argument presented by मखदूम साहब कि जब उन्होंने एक एल फोरम इलेक्ट कर लिया था लाहौर का तो वहीं पर रहना चाहिए था। ये फोरम शॉपिंग ही है मेरी नाकिस राय में, और दिस प्रैक्टिस शुड नॉट बी कंडोन्ड। ये जो पिटीशन इन्हें फाइल की पेशावर में, इन्हें डिस्क्लोज किया कि एक लाहौर में भी पेंडिंग है? नहीं सर, मुझे नहीं नजर आया, बट मैं डबल चेक कर लेता हूं। बट मैं उससे भी एक प्रायर फंडामेंटल पॉइंट, हाउस कीपिंग अगर इसको लाइटली लेना चाहते हैं और मोर सीरियस अगर इसको अथॉरिटी की बेस देखना चाहते हैं, वो ये है कि ये कौन है आपके साथ जो खड़े? माय कॉलीग बदर, ही इज बीन वेरी काइंड एंड हेल्पफुल एंड आल्सो नॉट नाइदर काइंड और हेल्पफुल because he would be checking when we asked a question कि इन्होंने इलेक्शन पिटीशन जो पेशावर हाई कोर्ट में फाइल की उसमें ये उन्होंने डिस्क्लोज किया कि लाहौर में भी मैंने पिटीशन फाइल की। वो एक्चुअली टेल्स मी, वो पर उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनको दे दें, वो चेक तो कर लें। जी बदर जस्ट मेंशन कि मैंने चेक किया, सर्टिफिकेट में उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, उनका फर्स्ट पिटीशन है। बट नहीं, वो पिटीशन पेशावर में फर्स्ट है। उन्होंने जिक्र किया कि भाई लाहौर में भी एक पिटीशन है, बेशक उसकी वजह बता दें कि जी दूसरा मसला है, इधर दूसरा मसला है। नहीं जी, ऐसा नहीं। जो मैं शिव जिस Sorry, वो जरा on a lighter note था। I hope you don't mind. Not at all. I hope he doesn't mind. No, I would not be able to read all these documents without them. Just point out. नहीं कह रहे हैं, but actually पैरा 20 में जिक्र किया। सर्टिफिकेट में नहीं है, 20 सर्टिफिकेट में, पैराग्राफ 20 में। 20 में बात आ जाएगी। एक सेकेंड, नहीं पेज बता दें पिटीशन का पहले। पेज 38 कैंसिलेशन मेंबरशिप भी बता दें। पैराग्राफ 20 में पढ़ें। That however no written order was provided for longer than expected, therefore the petitioners filed several applications for copy of the order, saying that an order had already been announced and written order may be passed. The applications were filed on so-and-so, but no avail. Finally, an order was announced by ECP on 23/11/23, completely changing its earlier order announced on so-and-so, whereby ECP declared that the petitioner had failed to hold intra-party elections in accordance with prevailing Constitution 2019, and directed the petitioner to hold intra-party elections in accordance with the Constitution prior to the amendment of June 2022 within 20 days positively, and also resubmitted its result along with all required documents including Form so-and-so within 7 days. This order of ECP dated 23/11/23 has been challenged in writ petition which is pending in the Lahore High Court. Lahore. But इसमें आपने नंबर नहीं दिया और इसमें आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं कि ये रेलिवेंट नहीं है। मेरे ख्याल अगर या क्या वो बता दें, वो वाला पोर्शन बताएं कि ये अलग कंट्रोवर्सी है। वो I mentioned it, that was the question. I mentioned किया। पेज 50 पे देखेंगे जनाब सर्टिफिकेट। Lordship, I've just received page 50. Page 50 पे जो सर्टिफिकेट है, certified as per instructions of the client that this is the first petition before this court against the impugned order. This court, वो तो बात सही है उनकी। Earlier writ petition so and so was disposed of with the direction to ECP to decide the matter of IP. ये कौन सी petition है 5791? जिसमें डायरेक्शन दी थी कि जी आप नहीं पता, आप तो ऐसे कह रहे हैं पता है, किसी ने इसकी निशानदेही नहीं की अभी तक। मैं अभी बता देता हूँ। एंड पेज 602 पे जनाब फैसला है इसका, इसकी पिटीशन लिखी है वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 3 602 पे फैसला है जी। And the petition starts at page 585. The order in the petition and the petition starts at page 585. ये जरा पढ़ें, ये किसी ने आज तक जिक्र नहीं किया, तो ये क्या चीज है? 602 पेज पढ़ता हूँ जी। Petitioners through the instant petition have asked for the issuance of an appropriate writ seeking directions to the respondent to display published certificate of the PTI on website of the Election Commission of Pakistan in terms of section 2093 of the Elections Act.
2070 without any delay. During the course of arguments, we have been informed that subject matter of instant petition dispute over the intra-party elections of the Pakistan Tehreek-e-Insaf conducted on 2/12/23 has already been heard in detail by the Election Commission of Pakistan, and judgment has been reserved due to restraining orders of this court dated 11/12/23 and 15/12/23 passed in the instant petition. Being so, notwithstanding the arguments so advanced and hard-pressed by the learned counsel for the parties at the bar, keeping in view the peculiar facts and circumstances of the case, and in the larger interest of justice, rather than passing in any order or observation qua publication of the certificate of the PTI on the website and its publication in the official gazette under the provisions of... ये स्टेक ऑर्डर दिखाई 11, 12 और 15, 12 ये क्या है? जी मैं लगाया इसमें मैं देखता हूँ सर इसमें। और ये पिटिशन भी बता दें किस पेज पे है? ये पिटिशन वाज 585 सर। नहीं इसका ये जो 11 इसमें आर यू श्योर? अच्छा अब ये स्टे बता दें, ये स्टे कैसा है? ये मैं वो देख रहा हूँ, मुझे सर वो 11 और 15 का ऑर्डर मखदूम साहब है कहीं या नहीं है? Please see page 602. The last line on the page refers to orders, interim orders passed on 11th and 15th of December 2023. Are they on the record? My lord, they are not. Do you have them? My lord, I'll just check. Okay. ये इस पिटिशन में ने क्या मांगा था? तो प्रेयर क्या थी इसमें? जी मैं इसका प्रेयर है जनाब, on page 5 starts with 590. Hold and declare that delay on part of the ECP to publish the certificate of PTI on the website of ECP, especially in view of upcoming general elections. Again, it's missing language, sir. B, direct the Election Commission of Pakistan to forthwith publish the certificate of PTI on website of ECP as required by section 2093 in the interest of justice. Hold and declare that proceedings by ECP in this regard are without jurisdiction, without lawful authority and illegal, and no action can be taken by ECP in pursuance thereof. Hold and declare that ECP cannot question the validity of the IPEs, which is intra-party elections, on the basis of any objections filed by any person. In the meanwhile, restrain the ECP. Can you go back to page 602? In paragraph 2, this is the dispute. G. Any other point? Actually, the point that I wanted to make with reference to the Constitution was, my lord, that if Your Honour, when you use the word Constitution, just clarify. PTI or Pakistan? PTI Constitution. Achha. My apologies. Page 171. यहाँ पर जनाब देखेंगे कि जो शिक है 1.3.7, this is second from the bottom. SG, which is the Secretary General, shall represent party in all judicial and legal matters. So while the questions were being asked by the court, I observed that the Peshawar petition was not authorized by the Secretary General, but the Chairman. So this was just a point I wanted to bring to the court's notice. Umar Ayub Khan is a petitioner. In Lahore, in Peshawar. He's a petitioner, but he's one of the petitioners here. But the authority that is appended, अगर उसको मैं उसका सफा भी बता देता हूँ, वो that has been not given by the Secretary General himself, but by the Chairman. But like I said, oh sorry. नहीं, apologies. I think there's a last 2 points, sir. प्राइवेट क्लब नहीं है, अभी हमने सुना है कि पॉलिटिकल भी है, इट्स अ मोर. और आखिरी सेक्शन 66 का हवाला देना चाहता हूं, बिकॉज 104 सेक्शन ऑफ द इलेक्शंस एक्ट का जिक्र किया गया. सेक्शन 66 इज क्वाइट इंस्ट्रक्टिव टू दैट डिबेट. आई जस्ट वांट टू आइडेंटिफाई दैट. 66 सेज एक कंटेस्ट
a contesting candidate before seeking allotment of a prescribed symbol shall file a declaration before the returning officer about his affiliation with a particular political party, if any, along with a certificate from the political party showing that he is the party's candidate from the constituency. So ये जो तासुर दिया गया कि सिंबल, ये जो आपने लिस्ट देनी है या affiliation एसोसिएट करनी है, सिंबल मिलने से पहले करनी है, तो कोई अमर माने नहीं है किसी भी कैंडिडेट को अपने कागज जमा करा के इलेक्शन लड़ने के लिए. ये जो 1666 is it attending to general elections or intra-party elections? So I'm now coming to the general elections. नहीं, ये 66 जो पढ़ रहे हैं जी, general elections. I've not understood the point. Sorry, it was argued that the election commission perhaps wants to deprive the party from the symbol and in the process disenfranchise lakhs of people and also its members. So यहाँ पर वाज़े है कि कानून की मंशा ये है कि अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो जब अपने कागज जमा कराएगा तो उसने एक अपना एफिलिएशन लेटर और अपनी कागज प्रायर टू अलॉटमेंट ऑफ सिंबल करना है. तो जो एप्रीहेंशन है कि जी सिंबल नहीं मिला हम इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, ऐसा कोई नहीं है. पार्टी के बेस के ऊपर पार्टी ये कह सकती है जी कि मैं इस पार्टी का नुमाइंदगी से ये इलेक्शन लड़ रहा हूं. सिंबल की डिबेट बाद में शुरू होती है. जिस तरह मैंने कल गुजारिश की थी, 3 कॉन्सिक्वेंसेस थे, मैं वो दोबारा रिपीट नहीं करता. That is it, my lord. I have nothing further to add unless there is a question that I need to respond to. What is war of attrition? You should ask a question. I've asked a question. On the, I cannot answer that. लेकिन एक और सवाल में जब Badr was trying to mention, जब ये कहा गया कि जिस तरह इलेक्शन पिटिशंस के हवाले से बड़ी वाज़े प्रोविजंस है कानून में कि कौन चीज कब होनी है, क्या प्रोसीजर है, सेक्शन 3(1) और सेक्शन 4(3) का जिक्र नहीं किया गया 3(1) ऑफ द इलेक्शंस एक्ट, जो ये कहता है कि जहां पर, ये मैं पढ़ देता हूं सर, ये नए पॉइंट्स हैं तो हम जरा पढ़ तो लेना जी. ये सिर्फ वजाहत में करना चाहता हूं क्योंकि ये पॉइंट रेज हुआ. सेक्शन 31 नो सर, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 of the Elections Act 2017. In the performance of its functions and duties and exercise of its powers, the Commission shall regulate its own procedure. So अगर कोई ऐसी बात थी जो कह रहे हैं तो मेरी कंप्लेंट गई इंट्रा पार्टी के हवाले से, खैर ये तो ओके. और इसी तरह सेक्शन 4 में जनाब सबसेक्शन 3 जो है, इट फॉलोज द कंप्लीट जस्टिस पावर वेस्टिंग इन द कमीशन अंडर सबसेक्शन 1 एंड इट सेज, मैं 1 भी पढ़ देता हूं, द कमीशन शैल हैव द पावर टू इशू सच डायरेक्शंस और ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस एंड ड्यूटीज इंक्लूडिंग एन ऑर्डर फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी मैटर बिफोर इट. बाकी अटेंडेंस. और इसी तरह से सबसेक्शन 3, एनीथिंग रिक्वायर्ड टू बी डन फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट for which no provision or no sufficient provision exists shall be done by such authority and in such manner as the commission may direct. So वो जो challenge to the complaints and all है, उसके context में मैंने ये निशानदेही की है कि ये provisions भी exist करती हैं. The commission is not wholly deprived of power and authority. It is an independent body as the court has observed and it needs to be empowered. Thank you. Thank you. किधर हैं जी सर? आई एम इन्फॉर्म्ड कि पहले चिराग होता था बैट से. पहले चिराग होता था सिंबल बैट से पहले. किसका? 2002 में पीटीआई का सिंबल की जो बात हो रही है. ओके. जनाब ने एक सवाल पूछा था क्योंकि और सिंबल तो नहीं था, तो उसका मुझे उन्होंने बताया कि चिराग था. तो he's earned his keep. Always. More than grateful. Thank you. Anything? My lord, I just want to right of reply is restricted to the points other side is raised. Including the reasons assigned by the bishop. My lord, that would be my main burden because that has been the main plank of the argument of the other side. My lord, very, very briefly, may I just hand over a few
notes or chronology first? My lord, this is a chronology which has just been given. This is just to save your lordship's time. Ansab ko bhi dijiye. Ji. I will not read it. This just gives, my lord, the event and the timeline and the page number to facilitate your lordships. अच्छा, एक इनका ये पॉइंट है कि आप डिफरेंट स्टैंडर्ड्स अप्लाई कर रहे हैं, किसी को आप फाइन लगा रहे हैं, किसी को कह रहे हैं बाद में इलेक्शन कर दो, और सिर्फ इन्हीं को टारगेट कर रहे हैं. ये पॉइंट पहले आप एड्रेस कर लें. My lord, with your lordship's leave, as of yesterday, the enlistment of about 13 political parties. 13 or 30? 13. जी. They have been. आज कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान में? वो मैं आपको चेक करके बताता हूँ, बट 13. 175. सबूत है 13 की. 13 का सर, देयर इज एन ऑर्डर. 13 का. एक तो हमने खुद देखा था, ऑल मुस्लिम लीग वाला जो था, ऑल Pakistan Muslim League. Just place a copy of the order before your lordship. Where they are all being done by one order or 13 orders? By one order. ये order हमें दिखा दें. जी सर. So 13 plus 1, all Pakistan Muslim League was separate to this, so it is included in the 13. My lord, this is not a case of all Pakistan Muslim League. वो तो हमें पता है क्योंकि वो हमने खुद ही लिखा है परसों. इसी के पर लिखा. Sorry, this is 12 plus 1 is that. These are the 12 parties. Your lordship will see they're all listed on page 1. Page 1? The very first page. This is the order dated. नाम तो किसी का नजर नहीं आ रहा है मुझे. If your lordship will see after the name of the parties, your lordship will see on commission's notice, Dr. Paul Jacob Bhatti, President Chairperson, All Pakistan. कुछ और आपने हमें दे दिया. इस पे कहाँ लिखा है ये बातें? ये क्या दिया? ये किस ये ऑर्डर की बात कर रहे हैं? जी सर, the order dated 4th of January 2024. इधर कितने पार्टीज के नाम? Sir, if your lordship see the heading on commission's notice, and then your lordship will see serial number 1 to 12. अच्छा नहीं ये अच्छा अभी ये कुछ और दिया था. अच्छा ओके ये वाला है. अच्छा ओके गॉट इट. ऑल पाकिस्तान तहरीक, अवामी पार्टी, बहावलपुर नेशनल पार्टी, सबका पाकिस्तान पार्टी, इनको आपने उड़ा दिया है. Yes, the discussion is in paragraph 24. नहीं ठीक है, वो हम ऑर्डर वो हम नहीं देखना चाहते क्योंकि कल को हो सकता है हमारे सामने चैलेंज हो जाए. जी सर. हम सिर्फ ये देखना चाह रहे थे कि आपने वो क्या उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट तो नहीं किया है. जी, एनपी को प्रॉब्लम की जो डिटेल जजमेंट हमें प्रोवाइड की गई बिकॉज ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन केपी. The time was extended up to 10th of May of this year. उन्होंने रेफरेंस के लिए दे दिए हमें अभी जजमेंट. अवामी नेशनल पार्टी को आपने टाइम दे दिया कि इलेक्शन बाद में करा लो. Sir, that order I have also just taken a look at. It was handed over, a copy was handed over to me. In that particular case, the outer limit of the statute to hold elections is 5 years. Those 5 years had not expired in their case, and they wanted an extension. अच्छा उनका 5 साल नहीं हुए थे? 5 साल जो सर स्टैट्यूट में आउटर लिमिट है वो 5 साल नहीं हुए थे. उस 5 साल के अंदर की उनको एक्सटेंशन दी गई है. कॉपी दे दूंगा. अच्छा ओके ठीक है गॉट इट. माय लॉर्ड. Okay, what else do you want to say? My lord, a preliminary objection was raised by one of the learned counsel. Maintainability. Our respectful submission is that if this objection, first your lordship may see, file किधर गई file? Election Commission, please order. If that in a number of cases the Election Commission has come before this honorable court, and we have prepared the list to show recently the number of cases which I have to move everything. The Election Commission has come before this honorable court, and this honorable court has dealt with their matters. Your lordship saw that this has been happening way back since the case of Javed Hashmi. And your lordship will see these are all petitions of 2023 and 2022.
which have been disposed of by your lordships. Election Commission's petitions have been entertained under Article 185. 2 quick points on that. These are not reported judgments. No, my lords, insofar as we are aware, they are not. और आपने एक reported judgment भी तो दिया था. जी सर, दो दिए थे. कल दिए थे ना आपने? जी सर. वो तो लगे हुए हैं आपकी बुक में. जी सर. हाँ. वो भी लगे हुए हैं. 2 अनरिपोर्टेड भी दिए थे. वो अलग से दिए थे, जिसमें से एक इसी बेंच का जजमेंट है. सर, the short point to be made in that respect is that this would mean, if this interpretation is accepted, it would mean that any declaration by the High Court with respect to the powers of the ECP would virtually be the final, and this honorable court would have no jurisdiction under Article 185. I'm not really persuaded by that argument, so you want to move on to something My lord, I will immediately then move on to the next one. The next argument was made with reference to the Tirmizi case. Our respectful submission is we had read out that passage of the judgment before your lordship. I need not read it again. That's in the bundle. They relied on Tirmizi. My lord, they have said that there is, once they had gone to Peshawar High Court, they did not have to go to Peshawar High Court again, because the second order was a new cause of action which gave them the right to go to any court. Our submission based on Tirmizi is that in Tirmizi, this honorable court was dealing also with 2 orders, and this honorable court held that generally the principle of concurrent jurisdiction applied, but where you had elected... You read out that portion. Yes, my lord. The citation ki dobara batane. Yes, sir. This is, my lord, PLD 2008, Supreme Court 735. It is in volume 1 of your lordship's bundle. And relevant page was? Relevant page was, my lord, 760 to 761. And this is by what? How many judges? My lord, this is by 5 judges of this honorable court. PLD is a citation? PLD 2008, Supreme Court 735. At 760 and 1. The relevant 760, 761. This is tab number 6 of volume 1 of the bundle that I handed over, and the relevant portion is highlighted. My lord, from that, and we rely on that, and that's it, the rule of propriety applies, and therefore the High Court should not have gone into this matter without first attending to it and dealing with it. My lord, from there, we immediately, I have already given your lordship a chronology. We immediately move to the... What is the significance of the chronology? My lord, the chronology is just to facilitate your lordships to show what event took place on what date and where it is mentioned in these 3 paper books of your lordship. So that's just a facilitation. Agar if you don't agree with any item here, please let us know. ये जो दिया है document. जी. We have given. वो mark कर दीजिएगा. I don't agree. जी. So this is the chronology, my lord. Insofar as the judgment of the Peshawar High Court is concerned, the argument now gets focused. Now we know the reasons. Yes, my lord. Your lordship you want knows to the launch reason. an attack, or you withdrawing the attack? No, my lord. My submission is based on this, that the submissions which your lordship have heard, in order to save your lordship's time, the portions that I am going to identify, I have already highlighted in yellow in this photocopy of the judgment and placed before your lordship. The controversy significantly narrows down. If your lordship will see, the findings of the court are there from page 6 onwards. If your lordship turns to page 7, at paragraph 9, the learned division bench of the High Court reproduces the facts in 1 paragraph, and paragraph 10 is important. The lordship said the petitioners have questioned the impugned orders on legal as well as factual premise. Page 7, my lord. The portions are highlighted. The facts are in paragraph 9. 7. The finding is in paragraph 10, and I just read out the highlighted portion in paragraph 10. We've read it. What do you want to say? My lord, I want to say that the High Court is saying that if so far as the facts before the commission are concerned, we will not go into that facts.
So if ECP had jurisdiction in the matter, then we had no mandate to interfere in the said findings. So they are saying we'll accept the findings of fact as they are. We will not interfere with them. थोड़ा contradictory लग रहा है. My lord, is it my imagination or what is it? My lord, in a sense it is, and I'll show to your lordship in a moment why it is, but may I say what they're saying over here, they are not engaging with any of the facts which were stated in the impugned order on the basis of which it was declared that they are not eligible to assemble. The High Court does not engage with any of the facts. They accept those as correct, and they say if the commission had jurisdiction, that's the end of the matter. My lord, your lordship may turn the page. Paragraph 11 on page 8, I have highlighted the relevant portion, and I move on, if your lordship may then move on to the next relevant paragraph, which appears on page 13. In the middle of the paragraph, they say that the case of Salahuddin Tirmizi is not applicable. I have shown to your lordship that it is, and how it is. What is the reason given? My lord, the reason they give is that the petition filed by Mr. Umar Aftab Dillo and others in the Lahore High Court, they do not at all engage with WP 81171, which was with respect to the first round. However, as shown by your lordship, that was a fact which was before them. जवाद हसन साहब की जो ऑर्डर है वो पिटिशन का क्या नंबर है? 287. That's the one they engage with. 287 पहले फाइल हुई थी या 5791? 287 is subsequent. What was earlier was 81171. They don't mention that at all. क्योंकि उन्होंने डिस्क्लोज तो किया अपनी पिटिशन. जी बिल्कुल डिस्क्लोज किया है, but under your according to your lordship's judgment in the Salahuddin Tirmizi's case, they were obliged to deal with that petition. नहीं तो वो समझे शायद एक ही पिटिशन थी लाहौर वाली, क्योंकि यहाँ अर्लियर इन टाइम था तो ये कंटिन्यूटी हो रही है. मगर अगर वो अपने ऑर्डर में तस्करा करते कि जी नहीं इससे भी पहले एक पिटिशन थी तो शायद उनका फैसला बदल जाता. Absolutely correct, my lord, and that was pointed out to them in oral submissions, and that was okay. वो अब आप देखिए ना, अगर आप ये कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हुआ कि अगर आप पिटिशनर के वो जो उन्हें पैराग्राफ 33 पढ़ा था उसमें रेट पिटिशन का उन्होंने नंबर नहीं दिया. That's correct, my lord. जज साहब सोच रहे होंगे कि ये एक ही पिटिशन है. Maybe. उनको ये नहीं पता था कि 3 पिटिशन थी लाहौर में. That's correct, my lord. That's correct. क्योंकि अगर वो नंबर दे देते तो फिर कॉन्शियस डिसीजन हो गया. If I was a judge, I could have also committed the same mistake. ये तो हो गया क्योंकि ये पहले वाली इधर आए थे ये. I don't know, number उधर नहीं लिखा उधर. My lord, so far as my instructions are concerned, the counsel appearing for the Election Commission of Pakistan in his submissions had provided the number, but the record over here in terms of the judgment doesn't disclose it. My lord, if your lordship turns to page 18 now, the question is identified. In paragraph 19, the question is identified, and that's highlighted. The moot question whether the ECP has any jurisdiction to question, probe, and adjudicate the intra-party election dispute of procedural impropriety in the matter in the election process of a political party. Then the last 3 lines, the verbiage of section 208 does not authorize the ECP either to supervise the intra-party election or entertain any complaint regarding any irregularity in the said election. However, it is the command of the section 209 of the Election Act that a political party shall within 7 days from the completion of intra-party election submit a certificate signed by office. On submission of the aforesaid documents, it is the statutory duty of commission to publish a certificate. That's it. So they say we do not need to go. आपका कहना है कि certificate is a culmination of things. Yes. In fact, even things follow. उनका कहना है ये नहीं सर्टिफिकेट आ गया, आप हमारी इंटरनल मामलों में झांके मत. जी सर. Sir, if that were the case, then the ECP really has no power under 215(5)
to take any action in any case at all, because all that is required is a certificate signed by the party that we have held an election and following are our office bearers. Whether the election has been held validly, constitutionally, in accordance with their constitution. एक सवाल रह गया सर, ये जो कंप्लेंट आपके पास आई 14 कंप्लेंट्स, माय लॉर्ड, पहली दफा जो आपने नोटिस दिया था 2021 में, वो भी कंप्लेंट्स आई थी या वो आपने भेजा था कि इलेक्शन का टाइम हो गया है? सर, वी हैड वेरी इनिशियली वी हैड 2021 very initially we had ourselves written to them without any complaints. We had written. इस दफा कंप्लेंट्स आई? जी सर, we had डिफरेंट नेचर ऑफ कंप्लेंट्स आई हैं, वो कह रहे हैं कि हमें मौका नहीं दे रहे हैं. सर, that's correct सर. ठीक. So can you say there's a different list than the Lahore High Court, because the list in Lahore High Court pertained to not holding of elections and the list in Peshawar High Court pertains to not holding of proper elections? My lord, can you distinguish them or no? My lord, on the 2021 show cause notice, there was no list. They said, give us time, give us 1 year. We gave them 1 year. The list started with the order of the Election Commission of 23rd June, where on the basis of complaints and on its own findings, the Commission said that this 23rd June का order उन्होंने कहाँ challenge किया? उन्होंने वो order जो है वो लाहौर में challenge किया. That's WP 81171. जो 5 मेंबर बेंच सुनेगी, जो 5 मेंबर बेंच सुनेगी, पेंडिंग है अभी, वो पेंडिंग है. तो मुझे अगर कल वो अगर उसको मान लेते हैं, इनकी बात रिट अलाउ कर देते हैं, तो वो वाले जो लोग जीते थे कौन से इलेक्शन में 8 जून या 10 जून के जीते, जी, तो फिर वो बन जाएंगे. जी सर, 10 June के. There is a confusion about dates, but 8 to 10 June. That's absolutely correct, because then the second order. 8 जून है, 10 जून है. 10 जून. कभी 10 जून का है, कभी 8 जून. 8 जून का है. ये that's one of the discrepancies which the Election Commission also points out. नहीं, इनका आपका क्या है? 10 जून है, 8 जून, क्या मौक़िफ़ है? अली ज़फ़र साहब, वो वाला इलेक्शन 8 जून का है, 10 जून का है? 8 जून. मान लेते हैं 8 जून या नहीं? Sir, let's accept 8 June. That's correct. But if that election is held to be valid, then the second order of the Election Commission, which is now impugned before the Peshawar, which was impugned before the Peshawar High Court, cannot stand. If the Lahore High Court accepts that writ, this second order will fall. Either you take away the possibility. That possibility is a possibility. Yes, it is. Maybe not a probability, but it's a possibility. Yes, my lord. Yes, it is. So it is amounts to the same. Whether that's the test, I would imagine. I don't know. My lord, that's exactly the test, and that's the test as laid down in Tirmizi and as then the court said कि भाई अब तो ये infractious हो गया, अब इसको withdraw कर लो, तो उन्होंने कहा नहीं, आप इसको हम सुनेंगे, 5 मेंबर बेंच प्लीज लगा दें. जी, क्योंकि वो लर्नर सिंगल जज सेड कि भाई इलेक्शन हो गए, भाई खत्म हो गया, अब ये या कर रहे हैं आप इलेक्शन, जो भी, I don't know whatever the thing is. So they kept it pending. They kept it pending, and they said, no, please send it to a bench or of 5 let's put it judges. the other way around. Suppose yes. Peshawar dismissed it. So Lahore allowed it. ये भी हो सकता है? Yes, my lord. अच्छा. In either event, the submission is that on the basis of Tirmizi, the Peshawar High Court, with great respect, had no jurisdiction. If your lordship may see page. अगर हम समझे कुछ आप हमें ज्यादा बातें बताएंगे जमहूरियत के मुतालिक. My lord, may I just finish my engagement with this particular judgment? The combined read, page 20, the combined reading of section 208, 209 and 215 does not give any impression that the ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of a political party. My lord had observed that this is a judgment in rem. Yes. Or is it not? It is, my lord, because it is under Article 201 of the Constitution. It will bind the Election Commission because it is now declaring a finding of the High Court on a question of law. So it will act as a precedent. In view of this, the Election Commission now cannot go against this finding in any case at all. It will apply in every case. This effectively, elections are over. If we uphold the judgment, yes, my lord,
So they don't need to hold Then 215 is redundant. Because, my lord, if the power under paragraph subsection 5 of 215 is taken away, then the Election Commission's authority to insist that intra-party elections be held and be held in accordance with the Constitution. That's the statutory language, in accordance with the Constitution of the political party. That is the language which is repeatedly used in 209, 208, 215. Next point. My lord, if your lordship may then please graciously look at page 25, and that's the last portion I am identifying. It has the right to contest election under a common symbol. This constitutional right cannot be denied to it on the basis of absurd provision of law. My lord, find that word very offensive. My lord, this honorable court and the High Court can either hold a law to be valid or a law to be invalid, being in violation of the Constitution. It cannot, without holding a law to be invalid, hold that the law is absurd. That means if it was striking it down, it could be held. Yes, maybe. Yes, my lord. Yes. Not very legal language, but okay, acceptable. So when they are not striking it down, not to follow it on the basis that it is absurd means that they have not found it in violation of the Constitution, because if they did, then they should have struck it down. Yes. But if they did not, then they have to follow it. The High Court has to apply the law then. It can't simply walk away from the law saying it's absurd. ठीक है, ये आप वो कह रहे हैं कि जो declaration हमने नहीं मांगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो तो एक inbuilt implied term है, उसका क्या कहेंगे आप? My lord, the submission is that even if they have not sought a declaration, in view of this reasoning of the Peshawar High Court now, what is left in subsection 5 of section 215? Can subsection 5 of 215 be applied in any case from now on till any time in the future? What's the answer? The answer is no. If the party has given a certificate that elections have been held, the Election Commission has no authority to examine whether the elections were in accordance with the Constitution of the party or the law. The certificate of the chairman of the party or secretary general of party, whoever is the competent authority, will suffice. That will be the end. That would be the end of the authority of the Election Commission. The only way in which the Election Commission will be able to invalidate an election is if such a certificate is not given. एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही है, एक तो होता बाद में इलेक्शन शेड्यूल के बाद आप जल्दी जल्दी चीजें कर रहे थे, ये वो आपको ऑर्डर मिला और इंटरिम इंजंक्शन का उन्होंने ऑर्डर लिया या नहीं मिला? वो जो पेशावर वाली हाई कोर्ट का एक वो बता दें। और दूसरी बात ये है कि ये इतने अरसे से आप इनसे कह रहे हैं कि इलेक्शन करवा लें, तो क्या वजूहात हो सकती हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहे थे? My lord, I mean, I know it's a realm of speculation. If you don't want to speculate, fine. My lord, I would hesitate from speculating. I would move away. Fine. My lord, our respectful submission in respect of these. ये रत्नू साहब ये रोमन 3 में इन्होंने जाके फिर उसका इफेक्ट दे दिया खुद ही 215 का, ये क्या है फिर? Sir, our submission with respect is that is the inherent contradiction which my lord the Chief Justice was pointing out as well on page 26. If 215(5) is an absurd law, then how can a writ be issued strictly and is entitled to the election symbol strictly in terms of sections 215 and 217 read with any other enabling provision of the Election Act? So if this is an absurd piece of legislation, if no action can be taken on the basis of this legislation by the ECP, what is the basis of the honorable judges of the High Court to issue a writ on the basis of that same absurd provision of law? Unless subsection 5 is struck down. Unless the provision has been... My lord, if subsection 5 had been struck down, then the scope of controversy before this honorable court and submissions would have been entirely different.
But over here, the situation is that it is not struck down. It remains on the statute book. It remains as a valid piece of legislation on the statute book, but for all effects and purposes, it is made redundant. It is your Lordship's consistent jurisprudence that no piece of legislation would be regarded as redundant. Your Lordship can declare it as unconstitutional and therefore void, but your Lordship cannot declare it as absurd and redundant. That's the respectful submission. That's the line of distinction I draw between a provision of the law which is in violation of the Constitution and therefore for all practical purposes doesn't exist. Noted. And the one which exists, which has been made redundant. My Lord, those were all the submissions that we had to make. Did you find those orders or no? 11, 12. My Lord, one of the orders is at page 302, part 2. जी निकासी क्या है? Okay, My Lord, that is at page 302. Your Lordship will say interim relief notice for 19th. Meanwhile, the respondent ECP is directed to continue. Yes. Continue. The earlier petition continue with the proceedings pursuant to the impugned notice. However, no final order shall be passed against the petitioners. Then, if your Lordship will see page 308. As the main case has already been fixed for hearing on 19th of December, therefore notice of CM be given to respondents for the date fixed. In the meanwhile, the petitioners are directed to appear before the Election Commission of Pakistan pursuant to the notice dated 8th of December 2023. However, the respondent shall not pass any adverse order against the petitioners. What were they required to appear for then? My Lord, just to attend the proceedings. So hear them out, don't pass any order. Okay. And if your Lordship may turn to the next page, 309. challenge फिर क्या किया था उन्होंने उसमें? Sir, this was the time with the show cause notice had been notice challenge की. Yes. There was no order of the commission. No, my Lord. At that, yes. So simple show cause notice challenge की है. Your Lordship will see the notice is dated 12/12/2023. That is at page 576. Part 3, if your Lordship has the chronology, it's on page 4 of the chronology. नहीं, हम actually देखना चाहते हैं. जी sir, it's at page 576, part 3. Sir, the page निकालो 596. ये चैलेंज की थी. जी सर. ये दिखा दें प्रेयर से कि यही चैलेंज किया था कुछ और. If your Lordship may turn to the petition, that my Lord is there at page 585. The prayer clause at page 590. And the proceedings are being called into question. If your Lordship will see. इस शोकॉज का तस्करा कहाँ है? ये तो कह रहे हमारा सर्टिफिकेट पब्लिश करें. My Lord, yes, and they are mentioning the proceedings before the ECP, and your Lordship will see the first page of the petition. No, I don't think so, because if you see the date of the petition, this is 9/12/2023. My Lord, yes. Your notice is 12/12/2023. My Lord, yes. So I don't think this was under challenge. My Lord, this was 14/12/2023, page 585. Huh? 585. जी. 585 में क्या दिखा रहे हैं? That is not the notice under. Yes, sir. That's not. The prayers are all there. 9th of December को इन्होंने फाइल की ना petition. If your Lordship may, उन्होंने कहा कि आप हमें हमारा ये symbol दे दीजिए. If your Lordship will see, they have thereafter filed a CMA, page 592. They have filed a CMA, which is at page 592.
application for interim relief. And your Lordship will then see at page 594, paragraph 5. ये इंडेक्स में लिखा हुआ है नोटिस इशूड बाय ईसीपी। यस माय लॉर्ड, यस इंडेक्स में भी है और फिर पेज 594 में पैराग्राफ 5 में भी इसका जिक्र है। ये इन्होंने अमेंड नहीं किया मगर they brought it on record. They brought it on record. Got it. And if your Lordship will see 595, their prayer, they're asking for it to be suspended. And impugned notice be suspended. That is added by hand. अमेंड नहीं करना चाहिए थी। My lord, it ought to have been, but that's application 151. Yes, my lord. And it's mentioned in paragraph 5, the notice is mentioned in paragraph 8 again. Got it. My lord. So it's mentioned in 2 paragraphs. वो जो स्टे ऑर्डर्स में दिस मैंने देखा हाँ वो स्टे ऑर्डर्स में सीएम नंबर भी ऊपर लिखा हुआ है। ये पहली पिटीशन किसने फाइल की थी? ये पेशावर में 5791 शख्स कौन था? दिखाना भाई। My lord, I'll just give it to your lordship in a minute. This is page 585. कौन बंदा था? PTI. Sir, it is page 585, Pakistan Tehreek Insaf. नहीं, वो शख्स कौन है? Muhammad. Through its authorized person. वो कौन है authorized person? My lord, if your lordship will see, there is an affidavit with the application at page. Malik Anwar Taj. Malik Anwar Taj, उनका affidavit लगा है 596 and he is also the petitioner number 3. इधर ना वो हैं क्या नाम है? उमर सेक्रेटरी जनरल इनके कौन है? उमर अयूब सर। इस वक्त तो उनके सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब थे या ये थे? नहीं सर, ये नहीं। मलिक अनवर ताज थे। No, Malik Anwar Taj, my lord, doesn't. He is, as your lordship will see, is vice president PTI KPK. ठीक। बस? My lord, that's it. Thank you very much. Anybody else? Everybody over. और बात तो नहीं है? Khan Saab, Ali, sorry, I think compliment goes to, first of all, Ali Zafar Saab and then Khan Saab and Mahdum Ali Khan Saab and Ahmed Hassan, we all argued very well. I wish you had not argued so well. Our job would have been easier. When the cases are very argued well, both sides, the job of the judge becomes more difficult. So now let us breathe and absorb and let's see. We'll have a discussion. Let's see what we come up with. I can't say anything yet. I have to have a discussion with my colleagues. Thank you very much.